through that, because we are going to discuss what is creativity for us. How can we unleash creativity? How can we bring creativity in our trainings? So before that, we need to know the group that we are in. संतोष जी Unfortunately, माइक अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, संतोष जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम ग्रुप में पेयर वर्क करा सकें. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वी गॉट सो फार, so that we can have that connection. So the first part of our, we all know, the first part of any training is not just the icebreaker with the trainer or the facilitator, और नॉट जस्ट इस्टेब्लिशिंग द क्रेडिबिलिटी. जो विश्वास हम जीतना चाहते हैं सबसे पहले, वो विश्वास जीतने के लिए हमारा, दैट इज़ वाई द प्रोटोकॉल इज़ फॉलोड. हमारा इंट्रो पढ़ा जाता है. इधर इस ग्रुप में वी ऑल नो ईच अदर, सो दैट इज़ नॉट वन ऑफ द कंसर्न्स वी हैव. बट राइट नाउ वी वांट कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम कितने कंबाइंड है, हाउ in synergy are we all, and that is how the peer group is going to help each other and create the ideas. So let's create the ideas. Anyone who would like to share कि क्या निकल कर आया? लेखनी जी, आपसे बिगिन करते हैं as you started. एक्चुअली आपने बोला था कि आपको अपने लाइफ के 3 मोमेंट्स जो क्रिएटिव मोमेंट आपको लगे हों वो आपको शेयर करने हैं. 3 creative moments and 1 expectation. 1 एक्सपेक्टेशन. सो 3 क्रिएटिव मोमेंट्स हम लोगों ने एक दूसरे की शेयर करी. उन्होंने अपनी बात बताई और मैंने अपनी बात बताई. ठीक है. तो आपके पार्टनर कौन थे? विशाल गुप्ता. ओके. सो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वैसे तो जो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मेरी लाइफ के 3 मोमेंट्स. एक तो स्कूल टाइम में इन द एब्सेंस ऑफ टीचर मैं खुद चॉक डस्टर लेकर और बच्चों को पढ़ाने लगता था. तो छोटी एज से ही काफ़ी मतलब मुझे शौक था. तो आई थिंक ये कुछ क्रिएटिविटी होगी, तभी तो इतने सारे बच्चों में मैं खड़े होकर पढ़ाता था. द सेकेंड वन इज दैट कि जब भी वो किचन में जाते हैं और अगर कुछ भी बना होता है तो उसको क्रिएटिव वे में कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका शौक है. तो Good. एक हाँ. तो ये. और किचन में जब जाते हैं then he is like, he हाँ, likes to, कुछ yeah. भी अगर सिंपल सा है तो उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से एक वेल मैनर्ड वे में कैसे रिप्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ एनीवन. तो उसका आपको काफ़ी शौक है. दूसरा ये कि कभी भी किसी के घर में कोई रिनोवेशन हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा तो वो उसमें आपसे हेल्प लेते हैं कि आप बताइए कि इसमें क्या डिज़ाइन हम रखें या क्या कैसे. आई थिंक दीज आर 3 पॉइंट्स. Great, thank you. And expectation? एक्सपेक्टेशन यही है कि वाकई में क्रिएटिव इंटेलिजेंस. वैसे तो हमारा मानना ये है कि जो इंटेलिजेंस में मज़ा आए, जिसको देखकर सुनकर मज़ा आए, दैट इज़ क्रिएटिव इंटेलिजेंस. अभी हम लोग क्या सीखने वाते हैं वो तो खैर अभी आप जो बताओगे उसी के अकॉर्डिंग. So उनका एक्सपेक्टेशन है समथिंग जिसको देख के मजा आए, समथिंग. आई मीन टू से दैट हम लोगों का ये मानना है कि ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें जिसको देख कर लगे कि हाँ दैट इज़ द थिंग. तो दैट इज़ क्रिएटिविटी. दैट शुड बी क्रिएटिविटी एक्चुअली. सम मोमेंट. ओके, गुड, थैंक यू. अब विशाल जी, आप बोलना चाहेंगे अबाउट लेखनी जी? श्योर. लेकिन जैसे कि लेखनी मैम से हमारी बात हुई तो उसमें ये था कि जब ZTWS में इनको एक प्ले करने को दिया गया इनकी टीम को पूरे, उसमें इन्होंने मदर का रोल किया था. तो वो बहुत क्रिएटिव थॉट था इनके लिए. सेकेंडरी जब ये लोग LGB अपने यहाँ करते हैं तो थ्रू बैकग्राउंड टू ड्रेस सारी चीजें मतलब समथिंग क्रिएटिव उसमें डालते हैं कि कुछ थॉट देते हैं उस पूरे मीटिंग को. इवन कभी कभी जनरल मीटिंग्स को भी ये पूरा एक थॉट देके करते हैं. थर्ड वन जो इंक्लूडिंग मुझे लगता है सारे लोगों को पसंद आया होगा कि लेकिन मैम का एक वीडियो आया था जिसमें अपने दोनों बच्चों के साथ ये RRR को डिस्कस कर रहे थे. वो मतलब अभी डिस्कस के दौरान हम लोगों की बात हुई तो मुझे पूरा वो रिकॉल हो गया वीडियो. सचमुच में वो वीडियो मुझे लगता है पूरे जोन में सारे लोग को अच्छा लगा होगा. RRR is sorry, reuse, reduce
and Oh, then acha, right. So that, you did a video with your kids. yes. तो वो Video बहुत अच्छा था, with बहुत क्रिएटिव था kids और बहुत ही मैसेजफुल था। for a cause. Okay. ओके। Yeah. Great. And one expectation, I think आप लोग दोनों की expectation एक ही है हाँ, because she was, एक yes. ही जैसे, Okay. जी जी Great. बिल्कुल, कि So किसी भी चीज को देख के जो अपना थॉट आ जाए। right, right, great. जी। Next expectation, and creative moments. Anybody would like to share? इतने groups बने, हमने एक दूसरे से share किया. So somebody would like to share here. अभिषेक सर, पल्लवी के साथ थे आप. Yes, good evening. Good evening, sir. So why don't you share? Yes, basically, creative intelligence is ability to create new ideas and new concepts. Yes. Wonderful, Okay, sir. Hmm. so the first ideas and concept which I used was in Nalanda सर 2009. आपको आपको पल्लवी के लिए बोलना है, पल्लवी को आपके लिए बोलना है. Okay, then we are हाँ. into the wrong direction. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. If you've not done the swapping, let's do it. So new concept in Nalanda. New Yes. concept in Nalanda. Then we created a new concept in Speechcraft 2019. Speechcraft. सर That आपके was पास I. तो शायद 3 मोमेंट कम पड़ गए होंगे, इतने होंगे. Then Okay. again, very new concepts was initialized in 2016 when I was ZT. Many things got changed in zone that year. Many thing newly concepts was initialized and many thing was done. That's Great, sir. Thank you. And now one expect. Yeah, my sorry. my expectation from this training is being a trainer, and as a trainer, how do we use creative intelligence for our training purpose so that our faculty, our co-faculties and other our we can help our students. That's Great, sir. Thank you. Thank you very much. Wonderful. So, we are actually learning a lot about what creativity is only by this exercise. So, how about Pallavi, you sharing? Today, as such, Shrija, I had not expected. I mean, I will have come as a blank paper, and I'm just wanting to learn and then create my, moments and experience it accordingly. So, what I Okay. have done is done. But now, what I can do, I want to learn that. Okay. But your 3 moments, I remember. So, why don't you recall? That's what I said. Now, what I've done is done. I don't want to recall that. I want to go for something Okay. new, something more creative, I'll just put it with you all. She created a car rally that was covered in Dubai paper, and that was the most creative, out of the box thinking that Pallavi did. And there are many other things that she kept doing. So उसका list बनाने लगेंगे तो बहुत time लग जाएगा. But this was one thing that is standing on top of my head. So yes, Anju ji तो नहीं join किया. Anil. So creative moment was during a training. One of the trainers showed a picture of Deepika Padukone, and in the bottom name of Alia Bhatt was written. So he asked, "What do you understand from this picture?" And everybody said, "The name of the picture is wrong. It should be of Alia Bhatt." But Hmm. actual creativity was the picture was right, the name written was wrong. So Right. it's actually how you think differently from others. Yeah, okay, okay, yes. And So second pick touch, was right and name was different. You could guess it, where most of the people said the name is right and picture is wrong. right? But Matlab there you was have a to, confusion created and you could guess it. yes. So creative intelligence के साथ साथ analytical intelligence भी आपने दिखाया. Great. And Two. second was during ZTWS, one of the assignment was within 5 minutes you have to prepare a humorous speech. So पता नहीं वो कहाँ से उस समय काम किया, but that creativity worked, and I think it was done well. Yes, wonderful. So there was a twist and you could create it. Right? एक serious person होने के बावजूद एक humor create करना बहुत मुश्किल होता है. So it was wonderful twist and he felt that that was the breakthrough moment. What else, Anil? I mean, expectation is key during Okay. difficult times, whether it is personal life or professional life, or say what is happening today in this country.
So during this such times, how do you think creatively? Creatively, because unless you think creatively, you will not get solution to the problems you are Excellent facing. for So solution. how do you channelize your energy so Hmm. that you start thinking in that creative direction, so that you find a Beautiful. solution which is out of the box in the current context which you are facing? So Great, I want great. to learn that art. If you can tell some points how to Sure, channelize. sure. I will try my best. And this is a very valid question. And actually, this is what we'll come to. So creativity is so many things for so many people, and that's what we all are learning. Actually, this whiteboard that I'm preparing is a part of our training. It's not going to be just the PPT and giving you information, but getting into the minds of people. As in, why creativity? What is the need of even learning creativity? Yeah, Anil has put it very well that सबसे पहले मुझे चाहिए कि डिफिकल्ट टाइम में सोल्यूशन कैसे निकालूं. Abhishek sir put it so well that my expectation is how will we bring in the lives of our co-pilots as well as our trainers, our trainees. So that is wonderful. Lekhi ji said some aha moment has to be, some twist has to be there. Great. And I loved what Pallavi said that, we I want to be blank paper and let things come in. So wonderful. Who else would like to give? Anil, आपकी partner कौन थी? Uh, Shrija, there is Shalini ma'am who she's raised her hand. Okay, She's Shalini ma'am, please go ahead. Then we'll come to गुड Pallavi's, इवनिंग. Anil's part. यस, गुड इवनिंग. मेरे साथ संतोष सर थे और Okay. संतोष सर का कहना है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ भी आज वो सीखें तो अपनी ट्रेनिंग के करियर में उसको और अच्छे से यूज करें, जैसे कि Okay. बेनिफिशियल हो स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन जो उनका एक बहुत अच्छा क्रिएटिव मोमेंट था लाइफ का, Hmm. एक बार इनके सारे वर्कर्स और सारे एम्प्लॉइज जितने भी थे उनको वो सारे ग्रुपिंग करके बहुत ही मेस क्रिएट कर रहे थे बिजनेस में इनके, तो इन्होंने सबको निकाल दिया एंड ही वाज अ लोन पर्सन. और वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही डेयरिंग स्टेप इन्होंने लिया था, बट दैट वाज वेरी क्रिएटिव फॉर हिम, जो काफी कॉन्फिडेंस भी इनको देके गया. और Hmm. बाकी के जो नए नए एम्प्लॉइज आए हैं वे सभी Hmm. डरते हैं इस बात से, उनको पता है दिस मैन इज वन मैन शो कर सकता है. तो ये काफी डेयरिंग और काफी चैलेंजिंग और बहुत ही क्रिएटिव मोमेंट था इनकी लाइफ. Great. So solution creator, he found his own strength by taking a tough decision. Wonderful. And I like the expectation also. What about Santosh sir? Would you like to talk about Shalini ji? हेलो. हाँ. मेरी पार्टनर शालिनी मैम थी और उनका कहना है कि इवन मैं जानता भी उनको हूँ. सर मैं हूँ अभी. हाँ, वही तो अगर उनका कहना नहीं, उनको जानता भी मैं हूँ कि कोई भी वर्क वो करती हैं तो उसको बहुत ही क्रिएटिव वे में करती थी हम लोग के. और जब भी जेसीआई का प्रोग्राम हो या स्कूल में भी, जैसे तो कोई भी आरएन में कोई भी प्रोग्राम होता था, शालिनी भाभी उसको बहुत क्रिएटिव ढंग से प्रेजेंट करती थी और उसको पूरा एटमॉस्फेयर को मतलब हैप्पीली बना के करती थी उस प्रोग्राम को. और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे उनके टाइम में. और जब भी वो प्रोग्राम कराती थी या कंडक्ट कराती थी जेसीआई में भी, इवन इन स्कूल ऑल्सो. Yeah. और इस ट्रेनिंग से वो चाहती हैं कि जो उनकी अभी, क्योंकि सारी ट्रेनिंगें ऑनलाइन हो गई हैं, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं, तो वो चाहती है कि उनके ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो उनके स्टूडेंट हैं या जो भी जहाँ वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उसमें उनको एड ऑन हो और कुछ और ऐसा क्रिएटिव हो पाए कि जिसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़े उनकी ट्रेनिंग में, उनके एजुकेशन फील्ड में और उनके पर्सनल लाइफ में. Great. Thank you. That is what absolutely the IO is. And what else? Anil, would you like to talk now again about your partner or who was your partner? yeah, Priti Tandon. I think her net is not doing so well. Okay. So Okay. So voice we was can tracking. we can skip. So any other group that wants to come in and add in some solutions? Avirubda, welcome. Yeah. Anyone else? Or shall I only pick up? Okay. So Arjit and Ashwini sir, why don't we come in? Arjit, shall I start or you'll start? Arjit, चलिए मैं start करता हूँ अर्जित के बारे में. Okay. Okay. So as we all know, Arjit is a fun-loving guy, and Yeah. he's very spontaneous and बहुत creative ways ढूंढता रहता है boring meetings को avoid करने के लिए, खासकर JET meetings.
creative lies. This is a very good point. Yes, but Okay. he never misses a chance कि अगर कोई भी गेट टुगेदर हो इनफॉर्मल वाली, he never misses the chance कि उसको मिस करे. Right. So he's So very creative in that. कुछ humor. चीजें जो अर्जित ने बताई, जैसे when creative moments, his creative moments, he did a storytelling in a competition where he explained कि वो बिना टिकट जब ट्रेन में उसने ट्रैवल किया Hmm. और टीटी को बड़े प्यार से झूठ बोल के उसने पूरा सफर काटा और उसको टिकट दिखाना भी नहीं पड़ा और वो बच भी गया. And he got the best prize for this storytelling because it was so Excellent. creative. It was very gripping. Plus, when Another example of creative humor, I would say. yes, Wonderful. creative humor. Yes. So Yes. and some creative projects. जब वो long president था, he did Jai Hind project करके जिसमें he organized a creative competition in different schools. एंड Hmm. वो क्रिएटिव बैजेस 26 जनवरी और 15 अगस्त के थीम पे रख के Hmm. एंड काफी अच्छे एंट्रीज आए थे. बच्चे बहुत इंथुसियास्टिक वे में पार्टिसिपेट किए थे. His expectation from this training is the way he can make things more interesting for participants, probably in form of quiz or some competition. So this is all about Arjit, what I Superb. know. And Ashwini sir, Arjit, are you coming in? यस यस यस. Yes. पहले अच्छा अच्छा सुन ले अपने बारे में फिर बोलेंगे. Aha. देखो इसलिए अच्छा बोला है, अच्छे बोलना मेरे बारे में, नहीं तो बहुत Yes. So please come in. Yeah. ओके. अश्वनी सर के लिए जो है उन्होंने बताया है कि लॉर्ड्स में आपको एज ए को पायलट अपॉर्चुनिटी मिली थी. Hmm. लेकिन डर था क्योंकि अर्पित हाथी जी मौजूद थे सर. अर्पित हाथी सर मौजूद थे और विशाल सर मौजूद थे. लेकिन इन्होंने जो है विशाल सर ने उनकी ऐसी हेल्प करी कि उन्होंने जो है वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स है उनसे कहा कि मैं इन दोनों के सहारे यहाँ मौजूद हूँ. जो जाने यही जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं है. तो इससे काफी जब तालियां बजी तो काफी कॉन्फिडेंस इनको वहां पे गेन हुआ. Hmm. इसके अलावा जो है इंटीग्रिटी डे पर आपने सभी को याद होगा, इंटीग्रिटी डे पर 2019 में क्या कमाल किया था आपने जेसीआई इंडिया में. जबरदस्त. सभी को Yeah. वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है. Right. नाउ जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं उसके लिए जो है बेटर फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस. जब ट्रेनिंग दी जाती है तो अगर उनको जो है सभी को उनको लगता है कि अगर मुझे बेटर फीडबैक मिल जाता है तो पारितोषिक नहीं होता है, पारितोषिक मिल जाता है एक फीडिंग. Hmm. वो उस रूप में बेटर फीडबैक ऑडियंस में मिल जाए, हर बार मिलता रहे तो बस उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है. Okay. This is the expectation. This is the expectation, right? राइट. The Okay. expectation is such when we are giving a training, जो Hmm. ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स होता है इन द मीन टाइम, अगर हम वी कैन वो एज अ ट्रेनर गुड ट्रेनर अगर हम उसे भाप लें Hmm. and accordingly we can change, we can increase the pace, decrease the pace, make some spontaneous changes Mm-hmm. to make things more interesting if it is going dull or participants का interest कम हो रहा है, especially in Super. virtual. Great. Wonderful. That's it. Anybody else who would like to share, or else we move forward into debriefing about what we exactly are doing? Anybody who has some additional points that they want to incorporate कि हमने ये डिस्कस किया है और इसमें ये पॉइंट्स कवर्ड नहीं है, समथिंग न्यू वाज देयर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू पीपल एंड वॉलंटरीली. सो समबडी इज चैट में डाला है. ओके. ओके. या. एनीबडी? ओके. सो आई एम शॉक. नितिन सर आप नहीं आए. Nitin sir, are you there in the room with us? Okay, he's not there. Okay, so I'll further now. I will elaborate on what exactly we did. So, what is the motivation in creating your breakthrough moments? Have you noticed that? कुछ आप लोग खुद, if you're looking at this chart or this whiteboard, what is it that is coming for you? What is the motivating moment for the breakthroughs that happen in lives of people when they suddenly become very creative? We saw someone talking about tough situation. शानी जी ने बताया कि संतोष जी की लाइफ में जब टफ सिचुएशन आया, he had to get into a tough decision, and that situational
creativity उनका boost हुआ. He started thinking of new ways of doing things. What Anil exactly wanted, his expectation, कि जब situational crisis आए, जब life में कुछ difficulty आए, तब क्या हम creative solutions निकाल सकते हैं? तो which part of our brain actually is responsible for it, and how can we bypass the analytical and logical mind sometime and उस unknown की तरफ हम जाएं from the known? It is really difficult, not really without a competition, as Arjit said. Is it possible कि आप उस unknown की दिशा को अपनाएं जब तक आपको कोई या तो कोई external extrinsic motivation मिलता है या internal motivation मिलता है? So if you see in all these, like how we and how do we get into creativity? या तो हम imitating करते हैं, modeling करते हैं, जैसे विशाल ने किया classroom में, kitchen में. He's more about how to present, how to use the resources, again how to present, how to use his artful mind in home renovations. So he's not about aesthetics, he's not about the extrinsic presentation, right? Then again their expectation also says aha moment, so they really want that presentation to come forward. ऐसे ही काफी और trainers ने कहा. लेखनी जी ने जब रोल प्ले किया, when she got into her emotional world, when she never thought कि इतना कुछ निकल के आएगा शायद उस presentation, उस role play में, then she got into a situation where her creativity came forward, राइट? अब हम सबके वेज अगर देखें तो कोई ना कोई आइडिएशन, कोई ना कोई कंपटीशन, कोई ना कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कुछ नॉकिंग बाहर से आई, तब हम क्रिएटिव हो गए सडनली, right? So this is one thing that we see from our whatever we have shared. Now the expectations of most of you are generally the basic expectation that a trainer would have, ki how do I bring it in the minds of my trainees? So first of all, get them into a questioning mindset. Let them know their own motivations first thing. So what am I doing here is I'm letting you know what motivates you to get creative. अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सम कंपटीशन, सम एक्सटर्नल फोर्स, सम मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड यू सडनली स्टार्ट बिकमिंग, यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज वो सिचुएशन डिमांड कर रहा है, because you want to present yourself well, because you want to be out there and really shine. So you start working through the novel ideas that come into your mind. I appreciate also one person here who said blank paper करते हैं, let it come from within. मैंने जो किया वो किया out of any situation, but let that blank, or ZD ma'am. So I like that attitude towards creativity. I also love what all you have shared, because this is giving you your strategy. This is giving you कि मुझे क्या motivate करता है. So creativity is an ambiguous. It is a unknown quality, I would say. हर किसी की क्रिएटिविटी डिफरेंट है. हर किसी का क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिस तरह से चलता है, वो किस मोटिवेशन पे चलता है, वो भी डिफरेंट है. what we need to find out, क्या मैं फन के लिए, like Arjit said, I like creative lies, creative storytelling, creative things. So is it because I want to create some fun and humor? Is it because I want to create some solution? Is it because I want to create some right presentation? मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ इस तरह से. How is my creative response coming and from where it is coming? Am I clear up till now? Great. So I will now stop this share and start sharing my presentation, and we will begin with the program. I'm not giving you the second exercise right now. I will come back to it. Let me explain to you what creative intelligence, as per the Oxford dictionary, is. Right? We have already spoken a lot about, for everyone it is different. We have spoken about everybody has different motivations. कभी intrinsic होते हैं, कभी extrinsic होते हैं. Extrinsic motivation है जो बाहर से आता है, like competition, award, to show somebody, to be the shining star. Intrinsic motivation comes when situational crisis appears, something like that happens. Even that is extrinsic, but from there, inside you, there is one solution maker जो बैठा हुआ है छुप के. वो बैठा हुआ है, दबा हुआ है स्ट्रीट स्मार्ट और एनालिटिकल बुद्धि के बीच में. अभी वो सडनली निकल के आता है, उसको हम कहेंगे म्यूज. ओके, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो हमारे अंदर का जो म्यूज है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सॉल्यूशन फाइंडिंग करने लगता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्ट्स. नाउ इसको हम एक प्रोसेस में ला सकते हैं जब कोई भी सिचुएशन नहीं है,
जब कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जिसके लिए हम दौड़े, या जब कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, जब हम बैठ के सिर्फ ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब हम ग्रीन रूम में हैं, हम कैसे उस पर्टिकुलर म्यूज को एक्टिवेट करें? हाउ डू वी ब्रिंग दैट अहेड इन फ्रंट ऑफ अस? सो सबसे पहले समझिए क्यों मैंने इतनी सारी ये मशक्क़त करी, एंड वी काइंड ऑफ 10 ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स तो हो गए हैं। वो क्योंकि हमको ये समझना है कि इट्स नॉट अ मेथडोलॉजी, it's a mindset. It is only and only a mindset. And the best news and the good news is that कोई भी mindset temporarily, आपका negative mindset, positive mindset, creative mindset, so you can literally get into that mindset anytime you choose to get in. सो ये हमारे ही हाथ में है कि हम कब उस माइंडसेट के अंदर जाएं, अपने म्यूज को बोलें आ जाओ, लेट्स बिकम फ्रेंड्स नाउ फॉर एन आवर, देयर इज नथिंग प्रॉब्ली, एंड और गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, like if Ashwini sir or anybody who likes to have something, to run for carrot and stick, अगर कुछ चाहिए तो give yourself a cue, give yourself a reward कि आज अगर मैंने ये क्रिएटिविटी, ये कुछ पर्टिकुलर जो भी आपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस के क्रिएटिव प्रोजेक्ट लिया है, if I'm able to do this, I'm going to reward myself with this. If you do this, then sorry, are you saying something, Ashwini sir? Okay. So we have seen that what it is: ability to acquire and apply knowledge and skills. Number one, openness, willingness, curiosity to push the boundaries. अगर हमारे अंदर वो बच्चों वाली क्यूरियोसिटी नहीं है तो we cannot push the boundaries. This is known to all of us. Yeah, the main challenge that trainers face is to come out of the status quo. Trainers के एक stereotypical beliefs हो जाते हैं, बोलते हैं ना स्पिरिचुअल ईगो सबसे बड़ा ईगो होता है, सो हम उसमें फंस जाते हैं, वी गेट स्टक, we know we've done. So what happens, that little thing that do it, renew our ways नहीं आता, because we already know our ways have been working, so क्यों नहीं हम ऐसे ही करें? So this is status quo से हमको निकलना पड़ता है. Now there is something really important. According to Robert Sternberg's psychological theory, एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस का एक साइकोलॉजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, विच वी ऑल एज ट्रेनर्स मस्ट नो. सो व्हाट इज दैट साइकोलॉजी? 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं. एक ट्रायर्किक थ्योरी होती है, उस ट्रायर्किक थ्योरी के हिसाब से मैंने ड्रॉ भी किया इधर. आपके पास 3 फंडामेंटल ये इंटेलिजेंसेस है. एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, समबडी शेयर्ड कि उन्होंने क्रिएट कर दिया था कुछ ऐसा पिक्चर, दीपिका पादुकोण नाम कुछ और. सो व्हेन वी क्रिएट मेंटल कंफ्यूजन, then what intelligence is actually working is your analytical intelligence. You are finding the right from the wrong. You are able to distinguish, and that is your analytical intelligence, which is very important as well, when we'll come to that. एंड देन अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों को, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. अब स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब क्या होता है? अगर रात में लेट हो रही है, लास्ट ट्रेन छूट गई है, अब घर कैसे जाएं? अब ये जो पर्सन है वो सोल्यूशन निकालेगा नहीं, ऐसे जुगाड़ करते हैं ना, ये ऐसे वैसे. सो दोज पीपल आर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल. दे आर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, ही सेड you will find many people who cannot analyze too much. रॉन्ग राइट उतना नहीं, केओस नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप उनको एक सिचुएशन में डालो, उस सिचुएशन से वो प्रैक्टिकली कैसे निकलना है वो ठीक अपना रास्ता बना लेंगे. और ये हम बचपन में ही सीख जाते हैं, राइट? या तो कुछ लोग सीखते ही नहीं है. सो देयर कैन बी सम पीपल हु कैन नॉट फाइंड द वे, दे विल गेट कंफ्यूज. अरे मेरी ट्रेन छूट गई, मैं क्या करूं? अभी मुझे बता मैं क्या करूं. यू मस्ट हैव सीन सच पीपल, राइट? अरे वो इतना बड़ा ट्रेनर है, उसको पता है, लेकिन वो practical intelligence is missing. Knowledge तो बहुत है, but right now he's got stuck and he's calling people, I don't know what to do, this has happened. So these are practical intelligence people. Okay. And last but not the least, obviously we are talking about creative intelligence people. I'm so sorry, my friends. Okay. So the last one is the creative intelligence, which we are talking about. The muse, the problem solver with a twist. The muse that brings in new solutions to you. The muse that will take you out not just by analyzing or giving you a practical path, but will give you even the impractical path. वो आपको 15 डिसीजन बताएगा, अरे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले. So these are the ideations, right? Then you will analyze, then you will take a practical decision. But
अगर आपने म्यूज की आवाज दबा दी है बोल के क्या बेवकूफ है, समटाइम्स नॉलेज डज ऑपोजिट ऑफ थिंग्स दैट वी, इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं कि हमको लगता है कि यार ये म्यूज क्या बक रहा है, व्हाट इज इट, इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज, वी स्टार्ट एनालाइजिंग इवन बिफोर आइडिएटिंग. एंड एलिजाबेथ गिलबर्ट जिन्होंने बिग आइडिया बुक लिखा है, उन्होंने लिखा है द आइडियाज कम टू यू. आइडियाज एक पर्सन है, एज इफ दे कम टू you, they knock at your door, you don't open the door, they move to somebody else. Next morning when you get up and somebody has opened a startup, you say अरे ये मेरे को आइडिया आया था यार. कितनों के साथ हुआ है ऐसा? कितनों के साथ? हाँ, राइट, थैंक यू. Somebody raised hand but I could not see. Right, Ramohan sir. Okay. So basically we've seen this, ideas come to us, they visit us. Creative intelligence जब हम suppress कर लेते हैं, because we have a lot of otherwise we are working a lot with our I would say left brain, which is the logic brain. जब हम उसमें बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं तो हम ये सिनर्जी नहीं कर पाते, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है धीरे धीरे बच्चों में ही रह जाता है, और बड़ों को ही बच्चों की तरफ देखना पड़ता है, यार थोड़ा बता मैं क्या करूँ. सो दे विल कम अप विद सम आइडियाज व्हिच आर रियली डिफरेंट. सो दैट इज व्हाई people with blank paper sometimes actually come out with better solutions than a lot of people with lot of knowledge. इसीलिए हम ट्रेनर्स को अपने आप को क्रिएटिव इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, because somewhere down the line obviously our line is such that we need to study, हमको पढ़ना है, हमको लिखना है. This is how we'll go ahead every day. We are probably I know everyone has that routine कि भाई 2 घंटा तो we have to read, we have to find new things. So what happens is analytical and practical intelligence तो डेवलप हो रही है, पर सक्सेसफुल इंटेलिजेंस डेवलप होने के लिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है. So as Anil had mentioned, the ability to deal with an unfamiliar problem or situation, coming up with a novel solution, यही psychological definition है of creative intelligence. If I will say experiential psychology is what creative psychology is. Experience, अगर वो आपके experience में है और you are ideating, then you will see. इसीलिए मैंने आपको बोला 3 breakthrough moments सोचिए, because you will see you were a little different from what you generally behave. You were giving a twist to your life. Okay, we all know it is innovation, intuitions. I will not go in the definition more. Now, this is very important. How do we get ideas? This is from my NLP, and I know all of you who've done NLP know this, but this has to be known in your, it should be in your awareness कि मेरा कौन सा gateway active है. So if you remember, as people were sharing, some people were very clear. Presentation मुझे बहुत पसंद है. क्या है उनका सेंसरी गेटवे जो सबसे एक्टिव है, कोई बताएगा? जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिनके थ्रू हमको आइडियाज मिलती है, उसमें कौन सा एक दिस थिंग इज मोर एक्टिव फॉर द पीपल हु लाइक टू प्रेजेंट समथिंग, for Vishal and Likhni Jim especially, since they shared. Maybe eyes, ma'am. Yeah, so your gateway is more of visual. Okay, some people said, I got such amazing feedback, applaud, award. It was like, I was talked about, I was this. So what kind of gateway is working for them, will you say? कोई guess करेगा? बहुत NLP वाले लोग हैं यार. Ears. Yes, very good. So they're auditory. Their gateway is कि उनको तारीफ अच्छी लगती है, उनको auditory, they like to be praised. आप कितना भी दिखा दो, ये करके वो करके, but they like it. आप उनको, you're telling them in words and they're listening to it. Kinesthetic. There were so many people who shared that, when I was there with my child, when I was doing this, when I was making something, when out of something, मुझे वो कितने लोगों ने नहीं शेयर किया. कोई क्राफ्ट करता है, कोई क्ले मॉडलिंग करता है, कोई पॉटरी करता है, कोई कलर से खेलता है. उनकी क्या गेटवे है? Imagination. फील. टच. सो काइनेस्थेटिक. ओके, काइनेस्थेटिक उनका गेटवे है. काइनेस्थेटिक, टच उनको पसंद है. सो यू विल सी हाई फाइव गेम्स. और हम जब अपना अपना प्लानिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाते हैं, हम ये सब रखते हैं. वी हैव क्लैप्स, वी हैव यू टच, हाई फाइव करिए, या ये सैंड पेपर से कुछ करिए, या उससे कुछ करिए, या विजुअल, वी हैव द प्रेजेंटेशंस, वी हैव
so many things that we incorporate when we are training, because हम चाहते हैं कि उनका सारा इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो थ्रू देयर सेंसरी फिल्टर्स एंड गेटवेज. अभी आप बताइए, जो लोग olfactory is a smell, जनरली बहुत लोग होते हैं बट उनको रियलाइज नहीं होता कि इट इज ऑल्सो अ गेटवे. बट जो किचन की बातें कर रहे हैं, कुकिंग की बातें कर रहे हैं, यू नो, मेकिंग सो वेल, वो कहीं ना कहीं नॉट जस्ट काइनेस्थेटिक और प्रेजेंटेशन, बट दे आर ऑल्सो in their taste, in their smell. So they are somehow getting the pleasing sensation through their olfactory and gustatory. तो ये 5 senses हमेशा as a gateway हैं. तो हम अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को खोल रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम डिफरेंस क्या है एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव में. हमको ये पता होना चाहिए कि किस गेट से क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं और किस तरह से हमको उसको आगे लेके जाना है. ठीक है. नाउ 6 एलिमेंट्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव करूंगी. तो अपने अपने, आई नो यू ऑल आर, यू नो, क्लोज योर shutters, but it's so good if I can see your faces. It'll be wonderful, so that I know you people are not doing anything else. Okay. मैं थोड़ी विजुअल हूँ सर, थोड़ा थोड़ा अपने विंडोज को ओपन करिए. ओके. So 6 elements जो बड़े important है. Okay, and I will give you this. You will have to choose from amongst you. और नाम लेना है कि कौन है सबसे ज़्यादा. अभी आप लोग, यू नो, जेड, अगर यहाँ पे जेड हैं तो वो जानती हैं कि आपके पूरी टीम में, जेड में, ये कहीं ना कहीं इस तरह की आपकी एक ना एक पर्सनालिटी होगी. ओके. सो क्रिएटिविटी, उसको देखकर आपको पता चलता है कि शी इज क्रिएटिव और ही इज क्रिएटिव. कौन है? गुरतेज, इफ यू आर नॉट आंसरिंग तो गए आप. मीता जी. विनीता जी. मीता 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 मीता. गर्ग. मीता गर्ग. ग्रेट, लिखनी जी. सो 1 माइल टू यू, कोचिंग माइल, 1 ट्रेनिंग माइल. हम पॉइंट्स रख रहे हैं. ओके. इंटेलिजेंस, आईक्यू, पूरी पूरी जोन में, नेशनल्स में, कहीं पर भी आप ऑफिसर्स हैं, आपको पता होगा आईक्यू के लिए इस पर्सन के पास तो मैं जाऊंगा ही फॉर, यू नो, दिस इंटेलिजेंस, फॉर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, फॉर दैट पर्टिकुलर इंटेलिजेंस दैट इज, यू नो, कि वो सोच के निकाल लेगा उसमें से हल, उसको पता होगा. अश्विनी भैया. अश्विनी. 2 ट्रेनिंग माइल्स गो टू लेखनी जी. ओके. अंजू जी, प्राइज रखना इसके लिए. ओके. नॉलेज. नॉलेज के लिए who is the person? So knowledge is a part of the IQ only. But संजय भैया. yes. Okay. Sanjay bhaiya. 1 training mile to अभिषेक केरिया. Abhishek sir. Okay. Oh, you're saying Abhishek ji for knowledge. Yes, Okay. Okay. और फर्स्ट आप ही ने आंसर दिया था क्या? तो अश्विनी सर को 1 ट्रेनिंग माइल. ओके. ओके. So Abhishek sir. Great. And now what is the difference between intelligence? ये मैंने 2 जगह क्यों रखा है? कुछ लोगों को बहुत नॉलेज होता है और कुछ लोगों को बहुत स्ट्रीट स्मार्टनेस होता है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, यू रिमेंबर दिस. नाउ थिंकिंग स्टाइल्स मतलब EQ, इमोशनल क्वोशंट. एक होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कितना भी सिचुएशन कैसा हो वो काम ही रहेगा पर्सन और वो हैंडल कर लेगा. आई नो 1 पर्सन, बट फिर भी व्हाट अबाउट यू गाइस? Ashwini. Ashwini Sayun, I was voting for him. Right. Anju di. Good. रवि भैया. अंजू जी. Anju di. Yeah, I agree, अंजू जी. अंजू जी. हम तो सब गुस्सा होके बैठ जाते हैं. अंजू जी का EQ is perfect. Everyone, Right. everyone angry. And I would say Ashwini, definitely. So EQ. So this is a part of our intelligence that we need to know. Personality. What would you say? The zone, the trainers, the national. What would you say? One person who comes to your mind. Anybody can say. ऐसे तो बहुत लोग हैं हमारे JCI में. अपना जेटी. अपना जेटी. Yeah. So Gurdeep, wonderful, Gurdeep, wonderful. I think most of you agree. Ashwini sir and Lekhni, 3 and 2 training miles. Okay. Motivation. A person. Sanjay Kapoor sir. राम मोहन सर.
कौन संजय अच्छा कपूर सर। RMG सर। अभिषेक जी बोले हैं, तो फर्स्ट ही आलोक सर संजय आलोक कपूर सर, अग्रवाल सर। आलोक अग्रवाल And सेकंड, Ram ओके Mohan sir. ओके, राममोहन Mohan सर sir. थर्ड, या All ट्रू, seniors, I all think. They seniors I think motivate. they are motivating, but yes, Yes, they संजय all कपूर सर motivate. का फर्स्ट नेम आया एंड अभिषेक सर को वो माइल जाता है, so we have one coaching training mile to संजय अभिषेक सर. एंड environment जिसके आने से you have this entire environment organized और उसको एक फन फैक्टर भी है, और समथिंग अबाउट दैट पर्सन कि वो ऑफ ऑर्गेनाइज कर कोर्स देता है. सृजा। Thank you. Thank you. And what about the current ZGB? What would you say? मैं नहीं हूँ करंट जीबी में, तो आई हाँ, डोंट नो। अपन अपन थोड़े पुराने वाले हो गए, हाँ, but yeah, thank you. So what about the सर current one? आलोक सर, आलोक सर। Alok sir. Great, great, great. So who said that? Alok sir. Anil said, na? आई सर, अभिषेक। Abhishek Abhishek sir. sir. So 2 training miles. So we have 3 to Lekni ji, 2 to Ashwini, and 2 to Abhishek ji. So Lekni ji is the winner, but Anju ji is going to give gifts to all. Yeah, Anju ji. Okay, so now let's know about the art that people have created. उनमें क्या intelligence थी कि वो ये सब arts create कर लिए? So obviously Picasso has, we've already discussed what is spatial intelligence. Spatial is environmental intelligence. मतलब हर जगह मुझे कुछ दिखता है, एंड यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल विद एवरीवन. और स्पेशल इंटेलिजेंस किस में हो सकता है? इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस. दे आर वेरी अलर्ट अबाउट वेयर दे आर, हाउ दे कैन यू नो यूज ईच रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट में. जितना स्पेशल इंटेलिजेंस इज दैट कि आपको अगर मैं रैंडम फिगर्स दूं, यू आर एबल टू ब्रिंग देम टुगेदर. इट्स नॉट मैथ्स, जस्ट मैथ्स. It's spatial intelligence. It's also about creativity, right? Then Freud, ये एक तरह का इंटेलिजेंस है जो इंट्रापर्सनल, दैट मीन्स कनेक्टिंग टू द एंटायर वर्ल्ड टुगेदर. सो फ्रॉइड कुड रीड, जो साइकोलॉजी के जो मास्टर है, फादर है, वो हर एक को समझ पा रहे थे, उनकी ब्रेन वेव्स को समझ पा रहे थे. ये सब हम में है, ये सब हम में भी है, बट कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके रखते हैं. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टॉप लीडर्स एंड अस. That is the difference between the top trainers and us, and that is what we need to develop. एक एक समझ लीजिए, this is one pot that you have to water every day. Not just knowledge लेके या intellect को sharp करके that we are going to reach somewhere. We have to get into this mind form. So Stravinsky या Beatles या अरिजीत सिंह या कोई भी musical intelligence, right? If I say in this group, musical therapist है हमारे साथ अश्विनी sir, so he has this musical intelligence somewhere. Einstein, logical mathematical skills. वन नेम ऑलवेज गिव्स मी लाइक यू नो, आइंस्टाइन तो है ही, पर हमारे जेसीआई कोलकाता के एक आइंस्टाइन है, वो है अनिल. वो ट्रेजर थे 2017 में, और कभी भी एक नंबर उनसे मिस नहीं होता था. आई थिंक हर ट्रेनिंग में उनका यू नो हिज आंसर्स वुड बी एकदम क्रिस्प एंड फर्म. सो आई थिंक लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के, लाइक कैन गिव हिज एग्जाम्पल. टी.एस. Eliot, Rumi, what were they? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड्स के धनी. हमारे जेसीआई में काफ़ी ट्रेनर्स हैं. राम मोहन सर, सर का वर्ड्स जो है वो इतने धनी है कि उस पढ़ के ही मज़ा आ जाता है. तो आई थिंक वी कैन से कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. नाउ आई एम गिविंग द एसोसिएशंस सो दैट यू रिमेंबर, सो दैट यू रिमेंबर कि ये चीज़ मुझे देखनी है कि मेरे अंदर कब उभर कर आती है. सो विराट कोहली हमारे यहाँ पे, हमारे एक तो प्रेसिडेंट हैं अभी जेसीआई कोलकाता के, वो भी है हमारे क्रिकेटर विशाल. एंड आई थिंक इन आवर ग्रुप्स ऑल्सो लॉट ऑफ क्रिकेटर्स एंड लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल आर देयर. सो उनकी क्या इंटेलिजेंस है? सो यू नो, आई डोंट लाइक व्हेन मदर्स प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन, अरे तुम यू नो इसमें अच्छे बनो, उसमें अच्छे बनो. Maybe they have this different intelligence that's working more, right? And as you develop these, you will see these contribute to the creative intelligence. It is not, creative intelligence is also only art. It is more than art. It is not just spatial intelligence. It is more than that. So विराट कोहली बॉडीली काइनेस्थेटिक. सो अगर आपको रियली क्रिएटिव होना है, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार या कोई एक अपना यू नो एक्टिविटी पकड़ना है, एंड अपनी बॉडी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाना है.
अपने सेल्स को रीजनरेट करना है, एक्टिवेट करना है. सो इट इज ऑल्सो वन वे you can come up with this muse, and muse will generate, he'll make you happy. That little muse that is inside will give you so many solutions every day that you will be, थक जाएंगे आप. मैं आपको आइडिया बुक बताऊंगी हाउ टू मेंटेन. गांधी, नेल्सन मंडेला, उनमें क्या था, सिर्फ बातों से उन्होंने जीत लिया. राइट, सिर्फ बातों से. दे वर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सो दीज आर हार्वर्ड गार्डनर बोल के एक आप बहुत लोगों ने जाना होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज. आप उसको पढ़िए एज अ ट्रेनर. यू शुड नो एज अ ट्रेनर दैट ऑल दीज इंटेलिजेंस इज वर्थ नोइंग, वर्थ ऑल्सो डेवलपिंग, कि मैं कौन से इवेंट में किस क्या एग्जिबिट कर रहा हूँ. राइट. How might we fail? This is the problem with the biggest block in creative intelligence. Okay. The biggest block that we have is how might we fail? I mean, what if you don't fail, yaar? What if? So don't read success stories, not just success stories. Read failure stories. You will get some ideas to get success. Here, I will tell you some of a very beautiful story, though I'm not a wonderful storyteller like Rituji, but I will still attempt at one story in a very short time span. So, सभी जानते हैं Honda Motors. एवरीबडी नोज होंडा मोटर्स. तो उनके जो फाउंडर थे, उनका नाम जापानीज है, सोई, आई सॉरी आई एम मिसिंग दैट प्रोनाउंसिएशन. पर मिस्टर होंडा, जब वो छोटे थे उनको बड़ा मज़ा आता था पिस्टल रिंग्स बनाने की. उनको इट वाज हिज पैशन, टू क्रिएट दैट. एंड ही वांटेड कि टोयोटा उसको खरीद ले. वो बना रहे थे एंड ही गॉट दोज आयरन पिस्टल रिंग्स कि वो टोयोटा अपनी गाड़ियों में लगाए. एंड ही टुक इट देयर एंड वट एवर, टोयोटा रिफ्यूज्ड point blank. So, anyways, this guy was a very mehnati person. So he started doing his own little workshop, and he started doing his little work of creating these chota chota parts of cars, engines and parts. Later on, he also started developing small cars. Obviously, we know first bicycle आई उनकी, motorbike. He developed all that. तो उनका पूरा एक ग्राफ है. I'll not go there. But as he was developing, he was very passionate. वो कुछ भी मतलब he would not miss an opportunity to create new things. He was getting rejection time and again. बार बार वो टोयोटा को नॉक करते थे. बार बार टोयोटा उनको रिजेक्ट करता था. फिर वर्ल्ड वॉर टू हो गया. अब वर्ल्ड वॉर टू में दिस इज एन इंसिडेंट दैट यू मस्ट हियर. वर्ल्ड वॉर टू में एयर बॉम्बिंग होती थी. वी ऑल नो अबाउट दैट एयर बॉम्बिंग, राइट. सब अपने अपने घर में छुप के बैठते थे. मिस्टर होंडा एक जगह छुप कर बैठते थे टू कलेक्ट द मेटल्स दैट यूज टू ड्रॉप फ्रॉम देयर, क्योंकि वो परफेक्ट था टू मोल्ड इनटू बिकमिंग हिज रॉ मटेरियल फॉर द कार्स. क्योंकि इकोनॉमी बहुत गिर गई थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्चुअली get the raw materials with the money that he had. Economy was very down in World War II. So he and his team would sit and collect those air bombing materials for his factory, for his workshop. And there are pictures available online, if you go and look at that passionate story of his, and it's so much inspiring कि वो उससे वो रॉ मटेरियल से अपनी गाड़ी बनाते थे. और एक वक्त ऐसा आया कि टोयोटा नंबर 2 हो गया और गाड़ी में होंडा आगे आ गया. Right. And those people who rejected, they were behind him. So you can understand that by little creative intelligence and other forms of intelligence, practical and analytical, how street smart he must have been to realize कि वो air bombing में मेरा material छुपा है. Right. How intelligent that guy must have been. So you have to, and how would he think creatively? Solution तो, situation तो खराब थी कोविड जैसी, राइट. ये वर्ल्ड वॉर 3 तो चल रहा है. सो सिचुएशन वाज दिस बैड, बट व्हाट डिड ही फाइंड? लाइक हमारे यहाँ पे सारे ट्रेनर्स, दे आर नाउ ऑनलाइन, दे आर लर्निंग टेक्नोलॉजी, दे आर डूइंग समथिंग दैट दे कैन डू बेस्ट in this situation. This is what we have to do every morning. We have to wake up and find a solution for ourselves. We have to be in such a place जहाँ हमको कम में ज़्यादा निकालना है, and that is how creative intelligence will help you in it. So these stories is what you don't just read, as our Abdul Kalam sir said, that don't just read success stories, read failure stories. Then you will get to learn more. Okay, so the blocks of creativity we have already discussed. Uh, sorry,
मेरे सर हैं यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर, अभिरूप जी ना, मैंने एनिमेशन किया और मैंने बहुत सारी पॉइंट्स डाली है, सो आई अपोलोजाइज, द टाइम वाज लिमिटेड, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस होल थिंग, ऑल दिस वाइल। सो थोड़ी क्रिएटिविटी इधर कम है। बिलीविंग यू आर इंट क्रिएटिव, राइट? बिलीविंग आप क्रिएटिव ही नहीं हो। आप बोल सकते हो मैंने क्रिएटिविटी कम डाली है पावर पॉइंट में, बट मैं क्रिएटिव हूँ। इफ गिवन टाइम आई विल शो यू, राइट? With all respect to myself. Okay. And making assumptions all the time about things. So this is analytical brain working all the time, full 24/7 उसको बोल सकते हो। अभी नहीं, अभी एनालाइज करेंगे, पहले आइडिएशन तो होने दे, राइट? सो एनालिटिकल ब्रेन को एक कंपार्टमेंट बनाओ, उसको एक स्ट्रीट स्मार्ट प्रैक्टिकल को एक कंपार्टमेंट। देयर आर सम पीपल जो उसी में रह जाते हैं, एंड आई हैव सीन बिग लीडर्स फॉलिंग डाउन because they have only been thinking about analyzing every situation, trying to get practice. They're not creative, they lose on there. What can come out of everybody? Some people have a human resource, टीम का आता पता नहीं है, बट वो हर टीम मेंबर से काम निकलवा लेते हैं क्योंकि दे वेरी क्रिएटिव, दे नो कि इसके अंदर ये है, लेट्स टेक दैट आउट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू नाउ नो। डोंट मेक assumptions, don't jump to conclusions. Following the rules too strictly. No, who said? We have to be a little creative, right? So I liked today's creativity, I would say. मैं हम लोग सब हैंड रेज किए JCI क्रीड पढ़ने में. Some people use the raise hand symbol while their videos were off. That's creativity. New way of thinking. So using things from Zoom and using it differently. So being too serious. Seriousness is a disease. It creates dis-ease for everyone around you. It's good to be serious sometimes when you need to come up with solutions and situations are tough, but find ways कि आप हर situation में अपना serious face नहीं लेके आए, क्योंकि seriousness उस muse को डरा देती है। वो म्यूज अंदर छुप के बैठता है, बहुत सीरियस है यार, नहीं तरजित, think about that creative juices that he says, twist the tails, get into the creative story zone, find your brain wiring in such a way कि वो सब unleash हो जाए। रूटीन हैबिट्स कीप चेंजिंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, 8 बजे ये करता हूँ, खाता हूँ, 10 o'clock आई सिट एट माई डेस्क। कम ऑन, इट्स ओके, चेंज समटाइम। आज 6 बजे नहीं, 7 बजे एक्सरसाइज करिए ताकि मिस नहीं हो। नाउ व्हाट दीज पीपल डू, लेट मी टेल यू, 6 बजे बाय चांस नहीं उठ पाए, दे विल से नहीं रूटीन में नहीं है ना, आई मिस माई स्पोर्ट्स टुडे। व्हाई? 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, go first thing in the morning, go walk. Because when you're creative, you'll find, okay, today let me not walk in the sun, let me walk in my room, let me do my 10,000 steps in my house. I can do it, I can very well do it. So finding creative solutions to issues. हम बंद हो गए हैं, बट हमारा सोल्यूशन मेकिंग जो ब्रेन है वो और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। यू कैन सी इट अराउंड टेक्नोलॉजी बूम, यू कैन सी इट, राइट? सो थिंकिंग अबाउट मोर देन वन सोल्यूशन जो अभी हम करेंगे, मेकिंग जजमेंट्स टू क्विकली, ये ऐसी है, इसका ये लेबल है, लेट्स स्टिक इट ऑन हर, she is like this or he is like this, let's stick the labels. When you stick the labels, labels are also getting stuck on you. So never judge a person and put him in a box. Everybody will surprise you because each day everything is growing. 7 years में हमारा पूरा body नया हो जाता है. We all know, Anju ji, you will agree with this, right? Vipassana. 7 years में हमारा regeneration होता है. So you can understand that how much we are changing. So how can you judge them on past timelines? How can you judge them on what happened yesterday? So many things, right? So 5 traits. Before that, let's go into how much time do we have, Anjali? Just this. मेरा time intelligence थोड़ा सा. Okay, 7:48. So we have some time, right? Anjuji, unmute yourself. Yes, ma'am. You just take Okay. your time. Okay, great. Okay, so before this, can we do something? You all have a copy with you? Quickly, got a minute? 1 minute job, okay? And be honest to me and be honest to yourself. Just make 30 circles in it, okay?
This I skipped earlier because we were taking time in that. Make 30 circles in it. Okay. We've spoken so much about things. Now let's see how things flow for us and कहाँ हम थोड़ा सा अटक जाते हैं. ठीक है, नोन अननोन के बीच में. और ये 30 सर्कल्स में यू विल मेक 30 थिंग्स जो भी आप देखे हो नहीं देखे हो, सर्कल में आपको जो भी याद आए. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू द बेसिक थिंग जो सबको याद आएगा, एक स्माइली. राइट. सो try to do something. Obviously you can obviously draw something that you've seen, draw something that you haven't seen, but you have to do this 30 circle challenge and then आपको वीडियो पे दिखाना है उसको सब and talk about it a little. So just a minute I'm giving you. Start doing it. Done. Great, wonderful. There is still 30 seconds still left. Wonderful. Great. Okay, pens down. And now who will show it to the, so मैं एक बार stop share कर रही हूँ so that we can all see it in the gallery. Okay, so okay. I'll just pin the photograph. Okay, मैं अनिल का पहले देखते हैं. हाँ, Yes. मैं तो देख नहीं पा रही हूँ. I think something wrong. Okay, Anil, can you show it again? हाँ. Oh, he's made a boxing punch, fruit, excellent, potato, smiley, up and down, emojis, and balloon. Great, great. Tomato. What else? Anil, would you like to say something? कि कुछ नया भी है? नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है. Okay, okay. Who else is showing? I like that. I like that. So I said draw 30 circles. Kudos. Very good, very good, very good. Yes. Thank you, Anjuji. You really proved it, huh? Meditators. Okay. And Vishal Gupta. What have we done? Okay. So Vishal, you did the first two lines. और प्रेजेंटेशन के चक्कर में आई थिंक थोड़ा सा इमोजीज ज्यादा बना हुआ है. व्हाट एल्स हैव यू मेड, कैन यू से? हेलो. हाँ. इमोजीज वो नहीं है. Okay, so you say because we cannot see properly. Yeah. राइट नाउ अभी जैसे जो मैं चीजें अभी पोस्ट कोविड फेज में मैं हूँ, तो जो चीजें मैं डेली फेस कर रहा हूँ वो सारी चीजें मैंने मतलब 30 सर्कल्स में से आई थिंक 10 सर्कल मैंने कंप्लीट किया है. ओके, 10 सर्कल्स आपने कंप्लीट किए. संतोष सर, हम आपका देख रहे हैं. थैंक यू विशाल. सो यू डिड बेसिकली व्हाट यू आर फेसिंग, और 10 सर्कल्स यू कुड कंप्लीट एंड देन इट डिडंट कम. राइट, वंडरफुल. चश्मा बनाया है इन्होंने, चारों को जॉइन भी किया, रास्ता बनाया है. Oh God, amazing, wonderful. So, and we can see the notch up, right? How our trainers are getting into it. So हमको उन्हीं की उसमें जाना है. So he's made objects, he's made things, he's made track, he's made. So did I say कि आप वो 30 circles को join नहीं कर सकते?
डिड आई से आप वो 30 सर्कल्स के साथ कुछ नहीं कर सकते, उसको ओवरलैप नहीं कर सकते. सो वंडरफुल, वंडरफुल सर. थैंक यू, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट, who's coming? अरे अश्विनी सर चुप क्या ही रहे हैं? दिखाइए. Already the best ones are out, so probably. See, no, 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 no. Listen to him, हाँ. यही एक इश्यू है that what happens is विशाल को EQ ने मारा, emotional intelligence. Emotional हो गया, whatever I'm going through, then I also have to be like, perfect. So मैं 10 circles में complete नहीं करूँगा. What? Oh, I like Abhishek sir. Okay, let me just spotlight him for everyone. ग्रेट सर ने अपना नाम लिखा है उन 30 सर्कल से, हिज इनिशियल. सर वंडरफुल. सो आई लाइक दैट assertiveness and I like that appreciation. And yes, so A. And हाँ, तो अश्विनी सर ने क्या कहा हम लोगों को कि अभी सब परफेक्ट वाले तो निकल गए. तो अभिषेक सर का और सबका देखा हमने. So what happens is we are, again we are scared of judgments. We are scared. We just need to get out of this fear. We just need to not worry about presentation. We need to just do the job with whatever thing it comes. Now we also have to learn and take inspiration from people like Anju ji, Abhishek ji या संतोष सर जिन्होंने इसको ट्विस्ट कर दिया. दे ट्विस्टेड इट कंप्लीटली. सो रिसोर्सेज हम सबके पास एक ही है, टाइम सबके पास एक ही है, चीज़ें सबके पास एक ही है. द ट्विस्ट हैज़ टू कम. हाउ इट विल कम? जब हम ये प्रेजेंटेशन का डर, जब हम परफेक्शन का डर, जब हम स्टीरियोटाइप या जो हम जानते हैं हम वही डालेंगे, या हम अपने इमोशंस के हिसाब से ही चलेंगे. जब इन सब चीज़ों से हम निकलेंगे तो हमारे क्रिएटिव न्यूज़ जो है ना, वो लिटिल बच्चा जो अंदर बैठा है वो खुश होके बनाएगा सब कुछ. सो दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग. Teacher, Yes, Abhijit sir Abhirup sir. wants to ask. Abhirup sir, yes. Yeah, I have a question. Yes, sir. So, see, the challenge which I face and which I faced in this activity also, like a Yes. lot of Anjuji and beautiful, creative, मेरे दिमाग में आते ही नहीं है. I mean, I mean, so how to bring that news out? I mean, Yes. हम तो So, स्टैंडर्ड जब whatever मैं you saw 30 seconds I draw that 30. पहले तो काउंट कर रहा था 30 होना क्या, तो काउंट करते करते 15 सेकंड निकल गया, फिर तो देन आई स्टार्टेड ड्राइंग whatever, तो Sir, निकल गया. sir, the only thing that I will tell you is, I know that you are very creative, but the only thing is that life is not an app. We can do so much more with it. The rules are not defined, so you have to stop creating rules for yourself. Stop being so conformist कि ये रूल है तो मुझे उसके लिए एकदम ऑनेस्टली वो. आई नो, सी नाउ दिस गोज विथ योर वैल्यू सिस्टम, बट दिस इज नॉट हियर. योर म्यूज डजंट नो. वो छोटा बच्चा है, उसको वो वैल्यू सिस्टम नहीं पता, प्रोटोकॉल स्टीरियोटाइप कुछ नहीं पता, परफेक्शन नहीं पता कि 30 सर्कल होना चाहिए. उसको तो ये पता है कि मुझे इतने सर्कल्स दिए, मुझे फटाफट उसका कुछ क्रिएट करना है. नाउ आई विल कम, हम लोग अभी आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले यू टू रूल अवे फर्स्ट assumption that comes into your head. You to rule it out, because your first brain that speaks is your analytical brain, right? So the analytical brain has rules. बचपन के कुछ voices, कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ rules हैं, राइट? सो जो एनालिटिकल ब्रेन की बातें हैं उस सबसे पहले अगर आपकी आ रही है, दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट्स योर ब्रेक थ्रू, व्हाट इज योर वे. फर्स्ट फाइंड आउट योर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सेकंड फाइंड आउट, अच्छा पहला ब्रेन ये बोला, नाउ फाइंड आउट द वॉइस. Practicality, analytical. But acha, we will come to it. Let's do something else. Let's do something else. And then when that something else, when you start creating more and more brainstorming, जिसको कहते हैं, more and more ideas, crazy ideas, stupid ideas, lies. I like Arijit who said that creative lies, यार मैं बच जाता था बोल के. ये भी एक strength है. बट अनफॉर्चुनेटली वो राइट रॉन्ग के चक्कर में हम स्टोरी टेलिंग भूल गए. हम वो सारी चीजें. सो वी जस्ट हैव टू, व्हेन क्रिएटिव इंटेलिजेंस कम्स इन पिक्चर, एनालिटिकल इंटेलिजेंस विल कम सेकंड. सो वी विल नॉट जज राइट रॉन्ग, वी विल जस्ट डू इट, राइट? सो दैट इज द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस. अब एनालिटिकल क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स दैट विल बी कमिंग,
बट क्रिएटिव इंटेलिजेंस का जब कुछ है, आइडिएशन करिए. सो वील कम टू दैट एज आई मूव फॉरवर्ड विथ माई प्रेजेंटेशन. लेट मी मूव फॉरवर्ड. Okay, this is the typical one that people do, right? So they make a ball, they make a bomb, they make something, they make clock, they make so many things that they have seen. Vishal was saying, हमने देखा है जो draw कर दिया. So right, the first impression will always be जो आपने देखा है उसको आपने imprint कर दिया. अब क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग भी देने जाते हैं, सबसे पहले हम खोलते हैं गूगल. पहले तो माइंड खोलो बॉस, माइंड खोलो, उसके बाद गूगल खोलो. पहले अपनी डायरी में लिखो क्या मैं सोचती हूँ, उसके बाद उसको वेरीफाई, एनालिटिकल बाद में. फर्स्ट एनालाइज नहीं करने बैठना है. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू वेयर आई हैड स्टॉप्ड. मैं होम और वो बना सकती थी, बट आई नॉट प्लान दिस लेटर. ओके, so we were talking about the 5 traits. Now these 5 traits we need to remember. Okay. I will simplify it as much as possible. This is part of the Roberts theory. This is part of creative intelligence theory. So the first one is look outside the mainstream, or in the easiest way, look outside the box. तो सबसे पहले जब 30 सर्कल मिले, look outside the box. हम लोग अभी सब लोग, most of us are lying in between the extreme users and extreme adopters, जो खूब अडॉप्ट कर लेते हैं, ये रूल है हमको अडॉप्ट करना है, और दे गो टू द एक्सट्रीम कि वो हर चीज को परफेक्शन से करना चाहते हैं. ये रूल बन गया, आई हैव टू फॉलो इट बाय द टी, इस तरह से. नाउ एक होते हैं एक्सट्रीम वियर्डोस, इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक पीपल. नाउ इडियोसिंक्रेसी इज अनदर थिंग, एंड हम मोस्ट ऑफ अस फॉल इन बिटवीन कि हम कभी कभी आउटसाइड द स्ट्रीम सोचते हैं, कुछ क्रिएट कर देते हैं, बट वो मोमेंट्स कम होते हैं. कुछ इंस्पायर करता है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनता है, कोई कंपटीशन आता है, कोई अवार्ड अनाउंस होता है, तब हम अपना ब्रेन चलाते हैं, अच्छा क्या करें. राइट, दिस इज हाउ वी थिंक. हमको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या पुश चाहिए इस लाइन को पार करने के लिए. लेकिन सम अब न्यूज इज इडियोसिंक्रेटिक. उसको तो बिल्कुल पता है कि थोड़ा एक्सेंट्रिसिटी, थोड़ा पागलपन, थोड़ा सा बियॉन्ड जाके कुछ करके आई विल पहले डू दिस. ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू, टू पुलिस इज सिटिंग, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल इज सिटिंग, दे विल पुलिस हिम, डोंट वरी. बट पहले तो उसको ब्रेक करने दो बैरियर. सो लुक आउटसाइड द मोमेंट. आई अभिरूप जी का आंसर में फर्स्ट में ही मिला है कि फर्स्ट जो थॉट आ रहा है उसको बाईपास करिए, go with another thought, go with another. So you will find that it starts flowing in, and एक बार वो खुल जाता है ना wall, it starts flowing in. This I've already told you. Okay. New ideas are rarely found in mainstream. In fact, the mainstream often rejects radical new ideas, which we all know. I told you about Honda. I told you, we all know about Steve Jobs. And when you look outside, you see how divergent thinking जिसको कहते हैं in scientific terms. But अगर normal में आप देखें तो उन्होंने भी 30 सर्कल ऐसे ही ड्रॉ किया संतोष जी ने. फिर उन्होंने बैठ के देखा स्पेशल इंटेलिजेंस फ्रॉम द बर्ड आई व्यू. पहले वॉर्म आई व्यू, छोटा सा ऊपर, ठीक है, देखा कि सब डिटेल ठीक कर दिया, उन्होंने ड्रॉ कर लिया. उसके बाद बर्ड आई व्यू, और इसमें और क्या कर सकता हूँ, देन ही ड्रू दोस ट्रैक्स. दिस इज अनदर वे ऑफ coming out of divergent thinking. So you need to start looking at this. General opinion, stereotypes, bias क्या है, क्यों है, उसमें नहीं जाना, लेकिन मुझे स्टीरियोटाइप से अलग कुछ करना है, समथिंग एल्स. कोई भी अपना प्रोफेशन ले लीजिए, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, तो वहां पे देयर इज अ रेड ओशन, इट्स सैचुरेटेड. How can you do something different that as a trainer people look up to you in a different way? So we've seen in the past 3 days कुछ अलग ही निकल कर आया, expectations. It was wonderful. So we saw how we were learning, we were enjoying, and that is what we need to do. We just have to get out of the opinions and traditional conventions. कुछ नया करने के लिए traditions को break करना जरूरी है. So that is one thing which is we all have to accept. The muse has to be active. Okay, of course, this guy, I love this video. Can you all hear the music? Just let me know. No. Okay, then I have saved it in my desktop because मुझे अभिरूप सर की बात याद. Okay, and I will share that with you guys because this video is something that
even if you've seen it. I see it almost every third day. It's on my phone, on my desktop. Okay. When I get stuck, I see him. Okay. Watch this. Tell me when you can hear the sound. Can you? Okay. Let I me think in share. Zoom you have to share the computer sound. Optimize नहीं किया था मैंने. Share computer sound, it will come. Yeah, I've done that. Sorry for this ditch, sir. Hmm. Hmm. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Yes. So this is one thing that I think is like a mantra for all of us. If we get stuck, listen to Steve Jobs, because he created this ad jingle, and it has actually the meaning: the rebels, the misfits, the round pegs in the square holes. You can understand what you got to be. You have to be really super brave to be doing what you can do. I know some of us, even though we disagree to them, we cannot ignore them, because they are the creative ones. They are changing. It is so difficult for some people to change. Seniors also, trainers also, कभी कभी difficult हो जाता है change होना. हमारी जो आज yesterday I loved when Sunil sir and Kuldeep sir said हमने तो ये सब किया नहीं. We used to do so many different things, but they are willing to change because they love training so much. Audience का style change हुआ, they are willing to learn and upgrade. So you understand, such trainers are actually the geniuses जो अपने आप को रोज बदलने के लिए ready है, right? Okay. To think differently, get over the I know it all attitude. Now, this is, I will not say cognitive bias, बड़ा heavy word है, but इसको मैं छोटेपन में बोलूँगी कि एक psychological, एक understanding है कि हमारे अंदर कुछ thinking errors हैं. थिंकिंग एरर्स, ठीक है. उसमें से एक, कुछ 6-7 थिंकिंग एरर्स हैं. उसमें से एक थिंकिंग एरर है, ये हम सब में है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे बिलीफ सिस्टम में है, कि हम सोचते हैं कुछ भी जान ली तो आई नो इट ऑल, आई नो दिस सब्जेक्ट, आई नो इट ऑल. सो व्हाट हैपेंस इज हम अपने आप को बंद कर लेते हैं. दैट इज द सेम टाइम समटाइम्स व्हेन यू आर ओपन यू विल सी that even a child will teach you something. I was the other day giving a very dhasu phrase to one of my little 6-year-old. You know what? You can take the horse to the water, but you cannot make it drink. Because I was trying to tell her, आपको ले जा सकती हूँ, मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ सर. तो उसकी वो पलट के मुझे बोली, no, if you think you can really help him to drink also, what stops you? And I was like, yeah, the truth is yes. So why didn't I think beyond the phrase? Because the kids don't have that I know it all attitude. We have, unfortunately, इतना जान लिया, अभी बस हमको पता है, right? So let's get out of that. Let's be the trainees who are sitting with us. Let's be them. Let's have that empathy for them. Let's get into their shoes and think कि उनको आज क्या सुनना है, आज कितना आगे जाना है मुझे. I will not finish my thing, but I will do as much as they want to know. So the thinking errors have to go, and please read about them. If you want, please download the app Mood. Okay, not just women, men also have mood swings. But anyways, Mood एक ऐप है. मैं आप लोग को उसका आइकन भी भेज दूंगी, क्योंकि Mood Notes, sorry, I will tell you the right name, Mood Notes. अंजू जी और जो कोचिंग और काउंसलिंग में, उनके लिए तो इट्स अ गिफ्ट. सो इन दैट यू विल सी द थिंकिंग एरर्स, दे क्वेश्चन यू. अच्छा, यू आर फीलिंग दिस,
Now they question you. Is it you're thinking, you're assuming something? Is it you're making something larger than what it is in your mind? Is it something that is, you're कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सेकेंडरी गेन के लिए अपनी खुशी को भी दबाते हैं, बहुत खुश है लेकिन नहीं बोलेंगे, so that's also a thinking error. So you will find those errors there, and you will enjoy it, will make your sadness disappear, because सब कुछ झूठ है, self created है. Okay, so you will see that. Okay, so another thing, embrace ambiguity. Ambiguity is unknown. The third step is embrace, उसको गले लगाना है. नहीं जानते, anxious होंगे. It is natural to get anxious when you know certain thing. Okay, you are going in front of the audience, you don't know the topic, probably first time you're giving it, you've not you have too much of your own person, you didn't get the time, but let that be the muse take over. Okay, let that be the muse take over. So ambiguity से uncomfortable नहीं होना. अब यहाँ पे I will tell you a bridge. एंग्जाइटी और एम्बिग्विटी से आप एक ब्रिज जाता है, और वो ब्रिज है आप ही के पास है, ब्रेथ. योर ब्रेथ. व्हेन यू गेट टू स्टक, व्हेन यू गेट टू फियरफुल, व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू इन आगे कैसे सॉल्यूशंस लाएं, ये एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक है जिसको पता नहीं यूनिवर्स में कितनी बुक्स उसके बारे में लिखी जा चुकी, कितने लोग उसके बारे में बोल चुके हैं, बट ओनली एंड ओनली योर ब्रेथ can activate this muse again when you relax your other muscles. I recommend box breathing. किस किस को आती है box breathing? यहाँ पे hand raises. Box breathing. डिनर कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे पता है पीछे. Okay, how many of you? Okay, yes, Anil knows, Anjali knows, I know. Who else knows box breathing? Can you write in chat? Should I share what is box breathing, or should I move forward? How many yeses I get? Let me check. Arjit says yes, he's with me. Avirup sir is with me. Shalini ji is with me. I'm glad. I'm glad. 3 people to hai. Anil is with me. Vishal is here. Great. Vishal says no. Don't share. Okay. Okay, Vishal. Yes, Abhinav sir is there. Santosh sir. Okay, Anjuji. Anjuji, you know it very so much well. Okay. So what is box breathing? It's a very simple technique, but it is very useful. अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राणायाम और उसमें आप नहीं जा रहे हो, करते हो तो बहुत अच्छा है. बट अगर आपको तुरंत कुछ अपने आप को रेगुलराइज करना है, एंड यू टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द अननोन. ओके, बिकॉज अननोन के अंदर घुसेंगे तभी तो म्यूज एक्टिव होगा. सो यू विल डू 4 काउंट्स इन, 4 काउंट्स होल्ड, 4 counts exhale, and 4 counts hold outside. Let's do it once, just 1 minute it will take. Let's do it. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Great. And then just with your open mouth, you can exhale any extra energy. Right? This is a very small process, but this is like a bridge. You do 30 counts of this, and let me tell you, koi bhi ambiguity hogi, confidence will come back, because we have everything inside. I told you the muse is very intelligent. Okay. So anything that stops you could be from getting into new opportunities, anxiety, get over it. Be bold, embrace the uncertainty. In NLP, if you've done, we have so many ways where we can simply change our state of mind. And that's what we love doing for ourselves and all the people around us. But you got to embrace it, and your mind will start becoming your friend and telling you the truth. Everybody is born with creative intelligence, everyone, right? And reframe your unease with the unknown as fuel for creative strategic change. Let me tell you, we are working with one of the child who's disabled mentally. She's not, IQ is not good, but creatively she's doing superb. She's every day creating something new.
And the best part is इसमें इतनी analytical skill नहीं है, तो she doesn't even stop herself, and she moves on. And when I look at her, I get even more inspired, because she is not stopping the muse from acting. And that is what we need to sometimes, let ourselves be. So we learn from everybody. Creative intelligence gifted to everyone. So be bold, embrace, and then let your unease go. That will fuel your strategic change. I'm going fast because this is basically something for the idea book to come in. Yeah. So act instinctively under pressure. What you need to do is you need to trust that inner voice. अभी उसके बिना creative intelligence is a friend to your inner voice, okay? And that voice is of your muse only. Again, I'm telling you, first, kyunki you're used to your strategy is analytical thinking, you will start with analytical thinking. But at that moment, tell yourself, stop, breathe, and then let your pen flow. Now, I'll show you a tool with which I do this. Okay. Let me share. Yeah, it's here only. This is what I do before every training. Okay. कुछ ना कुछ मैं करती हूँ. This is a very beautiful app. If you can download Mind Map. Okay. Mind Map नाम है इसका. मैं इसका वेबसाइट लिंक भी आपको भेज दूंगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. It's free also. So what I do is simply या तो कॉपी में करती हूँ, या अगर मैप ये है तो ठीक है, easy हो जाता है because then I can copy paste somewhere. But look at this. You can just simply have your mind map, and you can just say plus what do I think is stopping me, is my assumptions. Okay. Is my assumptions, sorry spelling, हाँ ठीक है. तो इस तरह से आप अपना अपना एक माइंड मैप बना सकते हैं, और अब यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स, क्योंकि when you start doing it, what happens is you bypass the flow of analytical thinking, and suddenly your creative mind will become more alert, क्योंकि ये 5 आइडिया तो assumption से आएंगे. पहले पहले 5 आइडिया जो आप जानते हो उससे आएंगे. उसके बाद जब आप आइडिएट करते जाओगे something new will come up. Okay, something really new. Okay, so हालांकि मुझे बड़ा डर लग रहा है, फिर भी एक गेम है जो ZTWS में हमने खेला था. So whoever is here, okay, all you have to do is, from Abhiroop sir, I'm going to call your name out and you will tell me bicycle part. Okay, part of a bicycle, easy, no? Unmute yourselves. Okay, so Abhiroop sir, what is one part of a bicycle? Tire. 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 Okay. Anjuji, another part of a bicycle. Pedal. Pedal. Abhinavji, another part of a bicycle. Chain. Chain. Very good. Shwini sir, another part of a bicycle. Bell. Bell. Anil, another part. Seat. Seat. Okay. Shalini ji, another part. Another tire. No, it's done. Tire is done. Part of the tire. And she's being creative. मैं पिछले वाले टायर की बात कर रही हूँ. हाँ, अच्छा चलो बैक टायर ले लिया. बच्चा ज्यादा एक्टिव हो गया. संतोष सर. संतोष सर. हैंडल. हैंडल किसी ने बोला? नहीं बोला ना? गुड. ओके. Who else is coming? क्योंकि सब म्यूटेड हो यार. विशाल. ब्रेक. ओके. Okay. राममोहन सर. गुरदीप. ओके. घंटी. बेल बोल दिया उसने. हो गया. टायर के नीचे रिम. स्टैंड रुपेश. स्टैंड. मडगार्ड. टायर के नीचे रिम. चेन हो गया. रिम. टायर के नीचे रिम. अभी हो गया. अभी बोला रिम. पीछे का बैठने का सीट जो है पीछे साइड का. सीट हो गया. पीछे का सीट. लॉक. वेरी गुड. समबडी सेड लॉक. अच्छा सुनो, टायर के अंदर ट्यूब भी होता है. ट्यूब. गुड अर्जित. ट्यूब. ओके. रिम भी होता है. रिम भी बोला. रिम बोल दिया आपने. रिम हो गया. स्टिकर. सॉरी. पेडल. हाँ बोल दिया. पेडल हो गया. और सोचो. चैन कवर. लोगो. कंपनी लोगो. नाम लेने दो. I'm very happy that you all have got energized. कंपनी लोगो.
रिम Okay. स्टिक्स तीलियां कंपनी होती हैं। तो चैन लोगो संतोष साइड में सर, होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। संतोष सर कुछ बोल रहे हैं, कम, संतोष सर कुछ बोल रहे हैं। कंपनी कंपनी लोगो कंपनी लोगो। शालिनी मैम कुछ बोल रही हैं। आई सेड की ऑफ माई लॉक। की हो गया, अच्छा लॉक और की अब हो गया, चलिए वेरी गुड। अच्छा, चैन लोगो के अंदर तीलियां होती हैं। टायर के अंदर जो स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल। पैंडल पैंडल से बात कर तू। अनिल अनिल बोल बोल, आवाज आ रही है कुछ। ओके टायर में वो जो क्या बॉल कहते हैं, बॉडी, बॉल बॉडी। अश्विनी बोलते सर। हैं ना? लग रहा है। संजय सर बॉल बॉडी कहते हैं उसको। नीचे आओ जल्दी। ओके अभी हैंड रेजेस होने लग गए हैं। अश्विनी सर। चैन कवर, क्या? चेन कवर। चैन कवर चेन रुपेश। कवर। ओके ओके, आई कैन नॉट हियर यू। वो रिम के ऊपर रिम के साथ तिल्लियां होती हैं। ओके चैट में लिखिए आप। राइडर। ओके वॉल्व, हॉर्न, ब्रेक, राइडर, frame. Okay, Spoke. Ashwini, springs, springs. Gear, Anil is gear. saying frame. For Okay, high-end cycles, gear. Abhishek ji. स्पोक्स, बेरिंग Bearing, very good. Spikes. इतना तो सोचा ही नहीं होगा, अभी तो आप साइकिल बना भी सकोगे। Gear. Okay, very good. So now you've given me more than 50 parts of the cycle in just 2 minutes. Now how do you see it works? First, you know what you know. Then We you still have know something what left. you never thought of, right? Then you go deep and deep and deep, and then you realize, okay. And Abhishek ji, please boliye. Water bottle stand and mobile Ah, stand. lovely. Excellent. See, we've never thought कि अरे ये भी part of the bicycle, even the person, the rider. So this is wonderful. So did we get the gist of what we are discussing? Did we get the gist of how do we embrace ambiguity and move past it? इनिशियली लगेगा यार 5 पार्ट से ज्यादा क्या बोलूंगा, फिर अचानक से आने लगेगा अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये. दैट्स क्रिएटिव इंटेलिजेंस. यू आर स्टिम्युलेटिंग योर म्यूज, and you know there's a laughter about it. There is, we were accepting everything. Back tire वो भी accept कर रहे थे. क्यों? क्योंकि this is what is brainstorming. This is what we do with ourselves when we want to come up with things, right? And then analytical mind comes up. She says beautifully, okay, she says make friends with the unknown. हम तो इस फील्ड में ही हैं. एवरी डे इट सरप्राइजेस अस, बट आई होप एंड प्रे कि हर एक इंसान जो प्रैक्टिकल जीवन में है, दूसरे प्रोफेशंस में है, उनको भी वो अननोन का टेस्ट मिले. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट ओपन्स वॉल्स फॉर यू. आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. इवन आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम एज अ ट्रेनर. ये बड़ा मैंने देखा है कि एज अ ट्रेनर पीपल हैव सो स्टीप्ड इन ईगो कि पहले खुद का ईगो लेट गो करके किसी को फोन करो यार मुझे पता है कैसे करना है. सो लेट योर सेल्फ बी लाइक अ कलेक्टिव पार्ट. नाउ ये ट्रेनर्स ज्ञानशाला कराने का, पल्लवी का और टीम का ये मकसद भी है कि जोन 3 के ट्रेनर्स एक हो, कलेक्टिव स्पिरिट में काम करें. एंड दैट इज व्हाट विल ब्रिंग अस लाइक वी विल शाइन, right? So that is what we need to do. एक individual play नहीं करता, collaborative play. So that is what is the game, you know, make friends with the unknown and the known, right? What if rather than being disheartened by ambiguity, uncertainty of life, we accepted it and relaxed into it? नहीं पता कोविड कब जाएगा, नहीं पता ये सिचुएशन कब इम्प्रूव करेगी. लेट्स रिलैक्स इनटू इट एंड डू द बेस्ट दैट वी कैन, एंड वी आर डूइंग इट. Even if it's that taking breaths and taking medicines or inhaling oxygen masks mein se, you've got to accept where you are, right? Okay, Abdul Kalam sir again. I love his Wings of Fire. अगर आपने नहीं पढ़ी है, get it, read it, and read each page to your son or daughter. And अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको जोर से पढ़ के सुनाइए. So my son sometimes doesn't like reading on his own. So रात में बैठ के मैं बोलती हूँ मुझसे एक चैप्टर सुन लो. I read it to him. So that's all. All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. So you need to know the creative solution to the situation you get in. You got to know what is a path above this. जब सारे पाथ खत्म हो जाते हैं, जब सब पार्ट साइकिल के खत्म हुए, एक पार्ट याद आएगा from the inner muse. So let that part at least come out. उसके लिए आपको exhaust करना पड़ेगा जो आप जानते हैं उसको, right? I've already spoken about mind maps. Wonderful tool devised by Tony Buzan. उसकी books पढ़िए.
It is beautiful. If you want, I have a PDF. I will send it mind mapping pe, and it's beautiful. So the most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. Even Albert Einstein, who had that intellect, realized that there is something about the unknown. Okay. Fourth point. We are coming towards the end. But fourth point के बाद मैं आपको कुछ idea books दिखाऊंगी. Develop an experimental mind. Now this is of course with most of us, all trainers here sitting here, I would say, have already displayed it. ZTWS के assignment में किया हो या NTTTS के assignment में किया हो, but कहीं ना कहीं आपने किया है. There was one experiment that KV Ratnam sir in my NTTTS told me to do, and I was shocked. I think Anjali, you will also have अभी जाके आए हो तो काफी experiences होंगे with your pilot. But my pilot told us, get out of the this room से निकल जाओ, 5 मिनट 15 मिनट बाद आओ, एक ऑब्जेक्ट लेकर आओ बाहर सड़कों पे से. And we were walking in the road and we were getting an item, and फिर उसके उससे एक पूरी ट्रेनिंग डेवलप करनी थी, पूरी ट्रेनिंग. ओके, सो कोई है वॉलंटियर करने वाला? एक डेमो दे. एनीबडी हु कैन वॉलंटियर, एनीवन. कुछ भी छोटा सा ट्रेनिंग कैन बी पॉजिटिव माइंडसेट यार, कुछ भी. ट्रेनर्स बैठे हैं, एक ट्रेनिंग चैलेंज तो लो. Okay, I give you the liberty of choosing the object. Okay, as per your requirement. आपके पास आस पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. पिक दैट वन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट से पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आती है ये बताओ बस, इतनी सी. अपने पास अभिषेक सर है, रिक्वेस्टिंग सर. Okay, who's saying pen? Abhinav, please go ahead. Go ahead, and we'll all help you because, as I told you, we are all collective now. Okay. पेन जो है हमें हमारे थॉट्स को राइट डाउन करने में हेल्प करता है, हमारे प्लान्स को राइट डाउन करने में हेल्प करता है, हमें चीज़ों को रिमेम्बर करने में हेल्प करता है, अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है. और हमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इसके थ्रू लिख करके जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, और इसी सेंटेंस की तरह हम सब हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही मीनिंगफुल है, अदरवाइज हम सब अलग अलग हैं. What a debrief. ये पेन जो है एज अ मेंटर काम करता है, हम सबको गाइड करता है, लीड करता है, और हमें थॉट्स को जोड़ करके एक हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनाता है. और बेस्ट पार्ट इज कि इनम यूज का एक डिवाइस है. इनम यूज कैसे बाहर आएगा? अगर आप पेन यूज करेंगे शायद और आ जाएगा. सो वंडरफुल. आई थिंक अपलॉड्स फॉर अभिनव जी. इट वाज नॉट इवन अ मिनट. नॉट इवन अ मिनट. सी, एनालिटिकल थिंकिंग, जजमेंटल माइंड, और ये बोल सकता था, अभी आया होगा कईयों को, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है. दिस इज हाउ इट इज. बट दिस पर्सन टुक द रिस्क बियॉन्ड assumptions, बियॉन्ड जजमेंट्स. ये पेन मेरे हाथ में चली, इसी के बारे में, इसी से मैं ट्रेनिंग बनाऊंगा. सो दिस वाज थ्रोन एट अस. व्हाट डिड इट डू? It opened our spirits. When you do this exercise with yourself, trust me, I have taken it with from people. केशव सर के साथ मैं एक फ्लाइट में थी. आई थिंक अनिल और को याद होगा, एक लॉट्स के साथ हम लोग वापस आ रहे थे, बहुत बड़ा ग्रुप था. केशव सर बगल में बैठे थे और एक बैंगल पे उन्होंने पूरी स्टोरी, मतलब पूरा ट्रेनिंग बना दिया था, हाउ टू मेक विथ अ बैंगल. एंड दैट वाज लाइक उस वक्त तो वो आहा मोमेंट में हम फंस गए थे कि हाउ कैन ही जस्ट मेक विद अ बैंगल, एंड देन ही सेड, डोंट लुक इनटू गूगल, look at what's around you, look at what's happening inside you when you think of something. कोई मेमोरी स्ट्राइक की होगी, कुछ हुआ, किसी का मेमोरी आया, किसी का कुछ हुआ, कोई सर्कल को देख के कुछ बोल रहा है. So he did only through a bangle. So what can we do? Inner muse is so active when you give it a challenge like this. So this is how we all need to start thinking now, and we need to come over this this experimental mindset के लिए हमको थोड़ा risk लेना होगा. Come out of the fear of judgment basically. So mitigate the risk. अब यहाँ पे आता है आपका, as I said, successful intelligence के लिए एक टोट, एक वे है how you can now test your ideas. Okay, so you test your ideas, you brainstorm with people, you test it out with people.
उस पर ऑपरेट किए। जैसे अभिनव जी ने एक आइडिया दिया, उसको टेस्ट किया, उसको ऑपरेट किया हम सबके बीच में, राइट? देन ही टेस्टेड अगेन, वो बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहे थे, ही केप्ट डूइंग इट, एंड देन लास्ट में उन्होंने डीब्रीफिंग की, एंड देन ही एग्जिटेड, right? So this is the method. Then you will realize my idea में weight है कि नहीं. He took a feedback, okay, and then exit. So this is a method that you can also use with all your ideas. पहले mind map बनाया, जो भी बनाया, brainstorm किया, उसके बाद you test learn approach. I know life is too short for trial and errors, people कहते हैं, but उसका भी तो एक रूल होता है ना, एनालिटिकल स्किल और नॉलेज को आने दीजिए, बट उसके पहले क्रिएटिव इंटेलिजेंस को उसके अंदर दबा देंगे। अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू रीड अ बुक और एलिस इन द वंडरलैंड फॉर एग्जांपल, हम एलिस को इमेजिन करते थे, आवर माइंड हैड बिकम सो विविड, कलर्स इमेजिन करते थे, उसका वंडरलैंड इमेजिन करते थे। नाउ इट्स गिवन ऑन अ प्लेटर टू द किड्स। इफ यू टेल देम आउट ऑफ द वे, किसी को इमेजिन करने बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे। शो द पिक्चर, अनलेस यू शो और यू टेल देम अबाउट इट, दे विल नॉट बी एबल टू। सो इतनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का जो आई वुडंट से क्रिएटिव इंटेलिजेंस से ही टेक्नोलॉजी निकली है, बट वन शुड नॉट डिप्लीट द अदर, वन शुड नॉट डिवॉइड यू ऑफ द अदर, एंड वो बैलेंस आपको करना है, दैट बैलेंस you have to do. So test, learn, know where to use analytical skill, but at a later stage, to cut short, to exit. So you got to work in this field. So टोट के बाद हम डेवलपिंग माइंडसेट कैसे कर सकते हैं? गॉट टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आई ऑलरेडी सेड, फ्लिप इट ऑन इट्स हेड, क्वेश्चन इट। कोई भी आइडिया आता है, देयर इज अ बुक कॉल्ड Questions are the answers. Socratic also said, Socrates, he said that if you keep questioning, if you have a questioning mindset and you ask the right questions, you will be beyond, extraordinary. You will be an extraordinary person. So that's what we need to now start doing. Okay, 8:30 हो गया है. Let me finish the fifth point in just 5 minutes. Okay, decision make. I think I've already spoken about this. I'm not doing this. Speed dating was one of the activities we were thinking, but we did the cycle one. Don't be too timid and squeamish about your actions, as life is an experiment. The more you experiment, you make it better. So be open, be experimental. And fifth is like the cocktail. I'm sure many of you will be very excited. A evening cocktail, mix it up. That's really important. The 4 points, and now you're going to mix it up. How would you mix it? Now you will check, you will do all the check that I was talking about. Boost motivation in work by mixing your focus, your routine, your environment. This is just an example. Time spent with unfamiliar helps people to think differently by forcing, just like the cycle example. And after that, when you start writing, you do tote experiment. When you do that experiment, you use your analytical skill. Now come to doing practical skills. अब अपने आइडिया को सवारें with successful intelligence, which is practically mix everything that you have so far done, and then build that beautiful training module or a life plan or business plan or whatever you're doing, right? E-books, books, right? I don't know how many of you are writing books, many of you must be. So this is how we also do it with them. Times this, sorry, this is repeated. When you mix it up, you will discover the benefits of reframing challenges. Now I'll tell you this in a short way, okay? Now क्या होता है कि जब हम मिक्स करते हैं तो उसको रीफ्रेम नहीं कर पाते ना। रीफ्रेमिंग होती क्या है? कोई भी चीज को जब आप अपने मन में चेंज करके बोलते हैं, you will change whatever is the normal, then you will reframe it. Let me give you an example. COVID. Okay, I'm throwing an example that any of you can pick it up. COVID has created so much stress in me. I do not know how to go ahead in life. And, you know, life has become stalled for everyone. Economy is down, medical facilities are bad. क्या यार क्या करें? So now how will you rephrase it? You are in front of this person who is complaining. How will you reframe his sentence and give a positive one, keeping his tenet in mind? COVID. हम रोज करते हैं conversations में. How will you do it? Show it to me. Anybody? Anju ji. Can you repeat the question? Ashwini ji, please go ahead.
COVID has brought so many problems, which has forced us to think what is the actual essence of our life, and we should focus on that. So look at the brighter side. We are focusing on our family. We are understanding what Shreja just told, that we are losing the creative side on just on a lot of unnecessary things and avoiding what it is actually necessary in our life. So we are focusing on our business, new ways of doing our business. We Yes. are rediscovering our love for our family, for respect we had for our family, which is probably we are rediscovering how much attention we need to give to our family members, be it our mother, be it our kids, and even employees, because everyone is right now, there is no differentiation of income, there's no differentiation of place, whether it's America or it's India, whether it's a developed nation, whether it's a developing nation, whether it's a poor guy or it's a rich guy, everybody is facing the single problem. So we are actually considering everyone of equal. So this is the Right. way kids are seeing it. It's equal. So we So have wonderful. So you've not just reframed, you've added points to his statement. This is what exactly we do when we reframe. A person comes in with a problem statement and we absolutely reverse it. So हमारा mind भी जब negative statements throw करता है हम पे, all we need to do, see, there are various ways to reframe जो हमारे NLP में है, which we I'll not get into, but all we have to do is we have to reverse, flip it in your head, reverse it, reframe it, and the challenge will become less, and it will prompt new thinking in the other person and you. Say you're in conversation or in conversation with yourself, to emerge out of it, the fifth, in the mixing up stage, you will reframe all the negative statements. So you've done all the four steps. Then there will be a lot of judgmental statements that will keep coming. Manoj ji, please boliye. Manoj sir, his hand is raised. Okay, so that is one thing that we need to do. This is a very simple exercise. If you got a minute, डू दिस विजुअल सैंडविच बनाना है आपको, या ये इसको होमवर्क रखिए, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव डन इट एंड आई टेल यू, it is wonderful creative exercise. So what you do is you make a visual sandwich, and the exercise will, put everything that you love, even vacation, swimming, all that you miss, everything you put in the middle of it. Okay. And you can give this sandwich a name also. This is you and your bucket list, or probably squeezed in you, changed you, and you put that in together. Now, what will this do? When you are putting it in, it will give you a free flowing list insight into your own self. ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे हमारी रिसोर्सेज और हमारा सिचुएशंस है, बट बीच में हम है, बीच में हम है विथ ऑल दैट वी आर, वी लव अबाउट थिंग्स, अबाउट लाइफ. So this is what you got to create. When you create this visual sandwich, you will see that how ideas start flowing in, and a process. This is a very beautiful process. I'll show you how it works. Okay. So we create something like this when it is, obviously we've done this exercise physically offline, maybe when we have actually created things and stuff. But what will happen is that when you start doing this visual से, जितना आप अपने अंदर जाके अपनी चीजों को बाहर निकालेंगे, उतना आप इनर म्यूज को एक्टिव कर रहे हैं. एंड यू डू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल सी, you will love it. How situations and whatever resources are there, maybe, is sandwiching. What is sandwiching between these two things are you. And when you've made that, what you have to do is you have to realize that what is stopping me is not of that importance. The meat between is the content that is within this sandwich, and that is what I am. That is what my muse is, and that is what I need. So you got to be doing this practically. We do it with a lot of fun, but unfortunately time bhi nahi hai. So let me go into my writing process. See, I am a writer, and what can I show you more than how do we write every day? Okay. So this is how you do everything. You can make sorry,
Okay, you made it. Lovely. Let me undo G. Wonderful. Okay, ocean, and you put in everything inside. Okay, you put in. I'm sure you're gonna label them. कि क्या क्या डाला है, right? Excellent. Thank you for doing this exercise so fast. Very nice. Right. So now, what's stopping you? ये भी देखिएगा. What's stopping up and down? So, like, what is it that is limiting me? And now, how can I best use my, whatever I love with whatever is limiting right now? So that's analytical and practical skills coming in. Okay. So this is the entire visual sandwich doing for us. Now, the next thing is brain writing. Okay. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कैनवा पे आपको इसके काफ़ी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे. ठीक है. Now what you do is when you are with your group or something, अभी तो अपने पास बहुत सारे tools हैं. Parthoda and Abhinupta has already come in. He's taught us how we can use various tools and we can use this as a online dynamically हम कर सकते हैं, right? Ashwini sir, yeah. So now what you got to do, write your idea on a notepad. Now read. This is how analytical skills start working. Read another idea and your own idea based on that idea. So for example, uh, Anil का example. अभी Anil को he's a financial advisor. So he thinks about one idea that he has. Now he reads Warren Buffett and then what he thinks about his idea. Okay, so first, whatever original idea is coming in, ये could be original or could be analytical idea, कुछ भी. एक particular situation है, you and your team are sitting. So first idea, कि हम कैसे कुछ नया काम करें. Now let's read Warren Buffett or the people who are doing good economic boom, all those channels are talking about. Now how they are doing it and what do we think about what they are doing, right? So this is called analytical writing about things like, say, what other trainers are doing and how am I doing it. So what is the thing and what do I think about it? So move to the next idea, then repeat. What is happening is not just brain writing but brain wiring is happening. You are not moving, you're now moving from creative intelligence to successful intelligence, because what you're doing is you are not just sitting and copying somebody, you're not just sitting and scared of things, but you are creating solutions with your mind and universal mind, and then you are thinking about how you process that information. So you're basically coming back to yourself, not copying, right? Second idea, again, this is how we work and we take it multiple, huh? Not just us, the entire team sits and they all put in their ideas. बच्चे हैं, बच्चों के साथ बैठ के, if you are at home and you want to do some creative stuff, or if you're in a team, you have people who are there, you can start doing it this way. Okay. Another thing, okay, this is our thing. Another thing that is, I've created this idea book. It is actually there, lino.it. डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पिन कर सकते हो चीज़ों को, एंड देयर lino.it उसमें जाके आप अपना एक बोर्ड बना सकते हो और उसमें आप पिन कर सकते हो योर आइडिया बुक. यू कैन क्रिएट एन आइडिया बुक बोर्ड. Every day we come across so many ideas. बैठे बिठाए, somebody said something, I heard, hearsay, I heard and thought. What did I think? I will put it here because the idea is told you. Elizabeth Gilbert said, ideas are like people. They visit you, they come, they knock, but you are so busy that you let them go and they become somebody else's idea because they then knock the next door, right? So what you need to do is put your visions down because they are your shower में vision आ रहे हैं लोगों को. कोई बात नहीं, बाहर आओ and put it down. Trust me, you will get such things. Okay, I don't know, somebody is calling. Is that Pallavi? Okay, so I think I'm way beyond time. I will be fast now. And so idea owner, हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, idea owner का भी नाम लिखो. When probably you may be the one who executes it, but where did it come from? अगर आपको याद रहेगा ना तो एक अलग gratefulness रहेगी. So for example, I was reading Tony Robbins. I know when I was reading Tony Robbins, I loved this thing and उसके बारे में मैं ऐसा feel करती हूँ और मुझे लगता है इसका ये और utilization हो सकता है, right? So this is how you come up with idea book. You create your own idea book. Everybody, online, offline, doesn't matter. Okay. Creative intelligence में technology as such important nahi, it's your mind, it's here. Okay. Now
incubation. Please don't think that aha moment will come immediately. It will come after you have incubated. When you throw your mind with a question and you sleep, next morning you will have 10 ideas about it. Okay. So that's called the incubation time, the patience ka time. I think we all have learned that. Many people, many stories are there in historical characters where you will get this only just throw a question and sleep. Drink a glass of water, write on the journal a plain question, and sleep. And you will be filled with innovative new ideas. Trust your muse. Okay. So that is one thing. And this is a very simple thing, but I think we can skip this for now because I've already discussed a lot of it. What we have discussed so far is this roadmap. So, what is it? Look outside the mainstream, go down, think different. You will be judged, you will laugh on yourself, everything will happen. It's okay. In this stage, in the valley stage, you will not at all assume anything. Embrace your ambiguity. Aega. I don't know that person. What am I thinking? I'm not following the rule. Perfect nahi hu main. Embrace it. Gale lagao. Breathe karo. Give yourself a calm state. Go back to work. Develop an experimental mindset. Tot. Now start testing because you've gone past the fear stage. Start testing your ideas. Once you've done it, mix it up. Strategy, analysis, reframing, इन सब चीज़ों को मिक्स करो और फिर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ. लाइक बर्ड आई व्यू. मिक्स इट अप. ऊपर जाइए और देखिए क्या क्या आपने इकट्ठा किया है. आइडिया बुक. So all that you mix it up. Incubate and set dumb yet smart goals. So what is basically dumb goals? I really like it. Dream. First step towards opening yourself is dream. Chunk up or down. Now chunk up or down is अपने imagination पे काम करना शुरू करो. Okay. You. Now M is methodology. Methodology अपनी practical methodology after that. Test टोट किया. अभी now practical skills में आए and street smart skills में आए. Now behavior will be changed for you or for your trainee only by following this little thing. Okay. So we go for analyze. How do we make training roadmap? उसमें कैसे इंटेलिजेंस काम आता है? हम एक्चुअली देखें तो ट्रेनिंग रोड मैप में ये है एनालाइज डिजाइन डेवलप इम्प्लीमेंट इवेलुएट इन्फ्लुएंट इंस्पायर. नाउ यू विल टेल मी एनालाइज में कौन सा स्किल आ रहा है? व्हाट इज द स्किल? What is the intelligence that is needed when you are in this stage, when you are actually understanding the need of the person or analyzing the key कारण क्या है, why am I making this? What is the things that are needed in quick? I think we've spoken, this is the last slide, so quickly if you can tell me. पर्पस नीड एनालिसिस. पर्पस नीड एनालिसिस. उसमें कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही है? एम्पैथेटिक स्किल, ईक्यू. इमोशनल आप नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा. सेकंड, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आल्सो वर्किंग हियर. समझ रहे हो कि कहाँ से आ रहा है ये बंदा, किधर प्रॉब्लम है. ओके. नाउ डिजाइन. डिजाइन में आपको कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए? अभी सब छोड़ देने का है, प्रैक्टिकल और सब. क्रिएटिव. म्यूज को एक्टिव करना है. म्यूज को एक्टिव करने के लिए 5 स्टेप वी ऑलरेडी स्पोकन. फिर अभी म्यूज एक्टिव हो गया, मिक्स किया, सब किया. डेवलप. उसमें कौन सा स्किल चाहिए? सारा इंटेलिजेंस चाहिए. टाइम इंटेलिजेंस भी चाहिए, मैथमेटिकल लॉजिकल भी चाहिए. वी नीड सी. अभी दैट इंटेलिजेंस इज मिसिंग इन मी, सो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. बट so that is what happens. You need to develop it through every analytical, practical, all skills needed. What is happening? कितना पैसा दे रहा है बंदा, कितना ट्रेनिंग देना है, सब कुछ देखना है. as professional trainers I'm talking, not JCs. Okay. Now go to implementation. Bodily kinesthetic. उसमें भी creative intelligence है, right? So you got to see, okay, here I'm needed in this department has to be strong, spatial environment has to be judged. So you got to be like the Picasso. स्पेशल इंटेलिजेंस भी देखना है, सब कुछ देखना है. तो अपने आप को उस तरह से फिर इवैल्यूएट एंड इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर. सो यू नो ऑल दिस. सो दिस इज आवर ट्रेनिंग रोड मैप एंड आई वुड से थैंक यू. आई थिंक इट्स डन. आई एम एंडिंग द स्लाइड्स. ओके. So thank you so much and I loved doing it. My muse is very happy. Thank you so much. Yeah, over to you, Anjali. Thank you, Shrija. Yeah. Yeah. Thank you, Shrija. So
I really hope आज सब लोग अपनी रात को सोने से पहले अपनी अपनी इंटेलिजेंस चेक करेंगे. आइडिया बुक तो What बना is लेना that? एटलीस्ट. Definitely, definitely. It was a wonderful session and very थैंक यू new सर, थैंक यू insights you सर. gave. And even I was thinking, I used to think that I am not at all creative, but वो 30 circles prove that थोड़ा सा है. Thank you so much. And from Zone, we have a small token for you. I would like to Okay. share here. Can everyone? This is for you, Shrija. And this will be mailed to you by our ZP, sir. I got, okay, yes. Can you Thank you so see? much. This is so brilliant, so nice. Thank you. Yeah, yeah. And any observations any would like to share about today's training? What was their intakes? Anyone? Anil? This is Vishal. Anju ma'am. Hanji Vishal. ट्रेनिंग सुपर थी और सृजा की ये दूसरी ट्रेनिंग है जो मतलब पर्सनली लास्ट लॉकडाउन में भी और इस बार भी जो बिना एक सेकंड गवाए मैंने पूरी ली है. और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज ट्रेनिंग जब शुरू हुआ था तो मेरा 5.5 ईयर का बेटा है, वो ट्रेनिंग में मेरे साथ बैठा था. आई डोंट नो वो ट्रेनिंग में क्या समझा, बट उसने ये कहा कि आपकी टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. Inner muse reflecting. Thank you, thank you. मतलब आज मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सृजा हमेशा टॉप पर होती है. आज मैं केवल अपने बच्चे का बात शेयर करना चाह रहा था कि आई डोंट नो उसने क्या समझा, शायद कुछ तो समझा होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. देखो दो जोन में दोस्त होते हैं ना, तो ऐसे अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं. थैंक यू. Thank you so much, Vishal ji. Anil Singhania. Yeah, I just wrote in the chat box. I thought कि वो इतना already late चल रहा है तो opportunity मिलेगा कि नहीं. But wonderful session, Srija. Always great to hear you. And I think this group is doing excellent, great work by the training team for coming up with such wonderful, innovative ideas, creative learnings for all of us. We will be version 2 by next week. All of us will be a version 2 trainer by next week. Super, super. Amen. Thank you, Pallavi ji. Pals, thanks to the pals. Thank you. Yes, Manoj sir. Thank you, Anju ji, for the privilege. Shrija, I had heard about you a lot, but this is my first privilege to attend your first training program. And if there is anything word more than excellent, it goes to you. I remember my training session, which started in the year 1998 or so. The first training, the trainer who told me, when you start your training, you should always have a smile on your face. And believe it, right from the beginning to the end, I could see that lovely smile on your face and that enthusiasm. Which I appreciate from the core of my heart, and I wish you all the very best. Thank you very much for giving us an opportunity. Thank you. Thank you, Manoj ji. Means a lot. Being so senior to me, coming from you, it's really a matter of honor. Thank you, sir. Thank you. Abhinav, sir. Abhinav. Thank you, Anju ji. तो उससे अच्छा ही बोलेगा. फर्स्ट टाइम सीजा की ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम देखने और सुनने का अवसर मिला. बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत ही थ्योरेटिकल चीज़ों को भी समझाया और इनोवेटिव तरीके से बताया और अपने हम सभी के अंदर जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है उसको बाहर निकालने के लिए सही सलाह दिया. Thank you. Thank you. Thank you, Abhinav sir. Ram Mohan sir, I could see him. मेरे गुरुजी बोलना चाहिए. मुझे तो केवल यही कहना है कि मुस्कुराहटों में क्या कुछ न सिखा दिया. श्रेजा, तुमने हम सबको क्या ना बना दिया. थैंक यू वेरी मच. मजा आ गया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. I'll request Sanjay Rundla sir for observation and vote of thanks both.
क्योंकि एजेंडा में उनका था, उन्होंने हाथ भी उसमें के सपोर्ट। यस सर, संजय सर और अभिरूप, यू आल्सो, सॉरी। या अभिरूप से आप अभिरूप जी से आप पहले यस, बोलने को बोल दो। या अभिरूप जी। Thank you so much. Pleasure. So I have a lot of respect with Shrija as a trainer, and I missed yesterday and Ritu's training, so I just remembered. So I attended. It's always very nice to see her training. It's been always great, and today's was equally excellent. So a lot of things, lot of takeaway for me, and देखते हैं अभी आगे जाकर कितना हम implement करते हैं. It's all in the implementation. So lovely, amazing session. Thank you so much, sir. Thank you. So there is a request from Shalini ji. Anju ji, please show what you created in 30 circles activity. Yes, please. Okay. एक बार spotlight हाँ, right. Wow. Great. Very nice. Thank you. Excellent. Yes, Sanjay sir. Anyone else? Doors are open for all. Mic is open for all. I want to say something. Yes, Ma'am. Thank you. Really, thank you so much. The lovely, smiling face, creative and intelligent Shija ma'am. Really very wonderful session this is. और मैं कहना चाहूँगी कि ये वही वाला इंटेलिजेंस देखने को मिला जिसको देखकर वाकई में लगा कि मज़ा आ गया. Wow, Shija ma'am, thank you so much. Thank you. I was just thinking, I wish I had created the aha moment for you. Thank you. Yes, Sanjay sir. Over to you. Thank you, Anju ji. One thing I really want to tell about Shija, how a simple girl transform her life as a transformal coach. Really, जब स्पीच क्राफ्ट में तुमको देखा और जेटी डब्ल्यूएस में तुमको देखा और फिर आज जो तुम्हारी ट्रेनिंग देखी, रियली बहुत मजा आया. और क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करूं तो कैसे जेटी डब्ल्यूएस का एक स्टूडेंट किसी एक एक्टिविटी को कितना क्रिएटिवली अपना आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई. और किस तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर शिजा ने यहाँ पर हम सबके सामने शेयर किया. नो डाउट हम ट्रेनर्स हैं और पॉसिबिलिटी थिंकिंग के बारे में जब हम सोचते हैं तो नेचुरली ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आने लगते हैं और वन बाय वन हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं. एंड शिजा, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब. और मेरे दिमाग में एक आइडिया बस आया था और मैं सोच रहा था कि किसको बोलूं और जस्ट सडनली मुझे तेरा नाम याद आया कि शिजा से करवानी है ट्रेनिंग. और थैंक यू. मैंने एक बार बोला और एक ही बार में तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में हम सारे ट्रेनर्स को एक बार रिवाइव करने के लिए बहुत ही एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन दिया, ट्रेनिंग दी यहाँ पर. और मुझे लगता है कि सारे ट्रेनर्स इस प्रेजेंटेशन से नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुए होंगे. मेरा एक रिक्वेस्ट और है, तुम्हारा इतना अच्छा मटेरियल है और जो तुमने बीच बीच में ट्रेनिंग में रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बात की थी, अपनी पीपीटी एंड रिसोर्सेज जो भी हैं वो ट्रेनर्स के ग्रुप में शेयर कर दो. सॉरी मैं आज तुम्हारी पूरी मैं तुम्हारी कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाया, मेरे हॉस्पिटल से कॉल थी, लेकिन मैं फिर भागे आया और फिर से मैंने लास्ट के कुछ 20 मिनट्स तुम्हारे अटेंड किए. लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं उसको दोबारा सुनूंगा. एंड थैंक यू अगेन, तुमने आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी. एंड थैंक यू ऑल द माय को फेलो लर्नर्स, आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे ट्रेनिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से कुछ नया सीख रहे हो. और जो हमारी पूरी जोन की एक सोच है कि हम सारे ट्रेनर्स फिर से एक्टिव होकर और इस जोन में नई ट्रेनिंग्स डेवलप कर सकें, तो वो मुझे अब सच होता हुआ दिख रहा है. थैंक यू ऑल द ट्रेनर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया
और थैंक यू माय एंटायर ट्रेनिंग टीम, स्पेशली हमारी ट्रेनिंग टीम की बॉस जेडीटी पल्लवी जी, अंजू जी, लेखनी जी, और हमारा बॉस जो जोन के करंट बॉस हैं जेडपी गुरदीप जी, कि आपने हम पे फेथ किया कि हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। नो डाउट मेरी क्रिएटिविटी अगर मैं कहूँ तो मेरा ये जो ट्रेनिंग वेब सीरीज है वही है कि आज इतने ट्रेनर्स एक साथ जुड़ रहे हैं और इतने ट्रेनर्स एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। थैंक यू अगेन। एंड कल का भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप सभी को सेम आईडी के साथ में, सेम फीलिंग के साथ में और दुगनी एनर्जी के साथ में यहाँ पर ज्वाइन करना है और इस वेब सीरीज को सक्सेसफुल करना और कुछ नई लर्निंग के साथ में दोबारा से रिवाइव अपने को करना है। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। हमारे साथ जाकिर सर भी हैं। जाकिर सर, इफ पॉसिबल। सॉरी आई मिस्ड यू। यस सर। No, nothing missing. I have my day tomorrow, and then definitely I'll be there interacting with you all tomorrow. Yes, sir. Yes. Thanks for joining, sir. Thanks for Sreja, joining. it was really wonderful observing you performing excellently, and what the feedback you're receiving, they are the sincere feedbacks, and no one is exaggerating. Really, in the meantime, when you started the program, because of my fasting, I had to miss about 10-15 minutes, but then I joined it, and till now I'm there observing each and everything. You have a very good career. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And please don't miss, tomorrow we are having Zakir sir's training, Beyond Horizon. Yeah. We'll be joining at 7:20 tomorrow, no? 7:20. 6:20, na? 7:20. 6:20. Oh, 7:20. Okay. No, 7:20. Okay, great. Tomorrow's session will be 7:20. Okay, sir. 7:20. Okay, see you tomorrow, sir. Looking forward. Thank you, Anju ma'am. Thank you Yes, for sir. the acknowledgement. अंजू मैम, एक छोटी सी बात सृजा के बारे में और बोलना चाहूंगा। अभी जैसे लेखनी मैम ने बोलते समय सृजा मैम बोल दिया, तो क्वाइट ऑकवर्ड, क्योंकि हम लोगों की जर्नी ऑलमोस्ट साथ रह गया है, तो मैम सर का ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। बिल्कुल भी नहीं जरूरत है हमको। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि एक ही पेरेंट्स के या एक फैमिली के कई बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट सबकी पढ़ाई लिखाई और फीडिंग सब एक जैसी होती है। कुछ बच्चे हम लोग जैसे डम और डफर निकल जाते हैं, और कुछ सृजा जैसे होते हैं जो जिन पे पेरेंट्स प्राउड करते हैं। तो सेम जेसीआई में हम लोगों का सब कुछ साथ चला। सृजा जैसे ट्रेनर्स जिस पे पूरे जोन को प्राउड होगा, अभी तो नेशनल को भी प्राउड होगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे फॉलो करने की। परफेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना है। विशाल जी जी जी। एक अच्छा दोस्त ना दूसरे दोस्त को अच्छा बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको आगे बढ़ना है और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, जो कि आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जब आप जाओ तो वो आदतें मेंटेन रहे। अंजू मैम, ये वाला जो है एडिट करके कट कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग से। बंद कर दो, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो।